Hello everyone, good morning. I am Mr. H.J. Saundar. Welcome you all on the behalf of organizing committee in this one-day international conference on multiculturalism in the contemporary literature. Organized by Internal Quality Assurance Cell, IQAC, Department of English, Department of Hindi and Department of Marathi, Art, Commerce and Science College, Palus. We are organizing this conference to provide platform for research scholars to present their recent work in the literature. Now, I request to Dr. P.M. Patil, sir, to introduce about today's conference. Hello friends, good morning one and all. At the outset, on the behalf of the college as well as the institution, I heartily welcome all. Honorable Ramchandra Patil Bahu, Chairman, Palus Shikshan Pathak Mandal Palus, Secretary of the institution, Honorable Donram Shinde Anna, and other members of the institution. Honorable key speakers of the conference, Professor Dr. Iham Hussain, who is an academic essayist, translator, editor and a literary critic from Dhaka, Bangladesh. Honorable Dr. Tripti Karikatti Ma'am, Professor and Head, Department of English, Shivaji University, Kolhapur. Dr. Namdev Gapate from Banaras Hindu University, Varanasi. Professor Dr. Yogesh Patil, Vidyavardhani, Mahavidyalaya Dhule. Our beloved principal, Dr. R.S. Sankesar. Delegates who supported us by doing their recitations for the conference, organizing committee of the conference, faculty and the staff of my college. Friends, we had planned to organize the conference on offline mode. But even today, there is a threat of increasing COVID-19. The outbreak COVID-19 pandemic has not only led us to stop face-to-face activity, but reminded us that the change is inevitable. Change is essential. So that we have decided to take this conference again on online mode. This is our second international conference organized by our college. For the first conference, delegates like you supported us by doing recitation and sending their research papers. To this conference, more than 100 delegates supported us. Even some research scholars from abroad participated in this one-day online international conference on multiculturalism in contemporary literature in Hindi, English and Marathi language. Friends, the conference aims to bring together leading academicians, researchers, research scholars to exchange and share their experiences and research results about multiculturalism and its aspects reflected through the literature. The factor of multiculturalism occupies a significant place in a contemporary literature. Multiculturalism recognizes the cultural diversity. It establishes cultural contact, exchange cultural ideologies, and promote the value of harmonious coexistence of diverse cultures. It offers alternative ways of life. As a social ideology, it becomes a positive force for creating socio-cultural harmony, mutual tolerance, and respect to different ethnic groups and their distinctive cultures. Multiculturalism is to be seen as a helping hand
to rebuild a nation instead of a threat to the national integration and social harmony. The conference welcomes the discussions related to the identified sub-themes and the other areas relevant and appropriate to the main theme of the conference. Friends, this conference would be fruitful and useful for the research scholars and academicians who want to do research on multiculturalism and issues regarding it. Once again, I welcome all of them, and I expect and I express my best wishes for the conference. Thank you very much. Thank you, sir. Now, I request to Dr. R.S. Sarangi sir to share our views about college. Namaskar. On this occasion of one-day online international interdisciplinary conference on multiculturalism in the contemporary literature, I heartily welcome to all of you, Honorable President of Palus Shikshan Prasarak Mandal, Ramchandra Patil Bhau, Vice President Dr. Ashatai Patil Mai, Secretary Honorable Dhunram Sinde Anna, and all member of council and today's conference resource persons, committee members, organizing committee members of this conference. Palus Shikshan Prasarak Mandal is established in 1958 by the great visionary late S.K. Patil Kaka and his colleagues. And Arts, Commerce and Science College is established on 21st August 1992 for providing higher education to the economically backward students in the rural area, especially for the girl students. Now it has become a center of innovation in the field of education. It is continuously striving for the excellence in higher education and encouraging students for outstanding performance. The college offers a wide range of conventional programs options like BA, BCom, BSc, along with the self-employed, self-supported professional courses like BBA, BCA, BCS. The college also runs PG courses like MA English, Economics, MCom, MSc Computer Science, MSc Zoology, PGDCA, and 7 skill-based career-oriented courses. The college is well recognized in rural area not only for academic results but also in the various fields like sports, culture, research and extension activity. It is a matter of great privilege to say that our college has been honored by Government of India for implementing digital financial literacy campaign as a part of Vittiya Saksharta Abhiyan Vishaka, and also honored by Government of Maharashtra as a state level excellent college for NSS activity. I hope that this international conference will be very fruitful for you. I convey my best wishes for this conference. Thanks a lot.
Thank you, sir, for your valuable information. Now, I request to Dr. Sudhir Lendwe, sir, to introduce to today's keynote speaker, Professor Dr. Ilham Hussain. Good morning to all. I am very happy to introduce you today's keynote speaker, Professor Dr. Ilham Hussain. He is an academician, essayist, translator, editor, and literary critic. He did his BA Honours and MA in English Literature. He wrote his MPhil dissertation on colonial literature and doctoral dissertation on novels of Chinua Achebe in the University of Dhaka. He has authored 11 books, Angst and Anxiety, Historical and Psychological Parallels in Chinua Achebe's Trilogy, The Colonial Encounter and the Post-Colonial Ambivalence, African Short Stories and Literary Thoughts, Tales of World Literature are some of his chemical books. He has translated Chinua Achebe's Things Fall Apart and The Trouble with Nigeria and Ben Okeri's Freedom Artist in Bengali. More than 40 of his research articles have been published in the academic journals of home and abroad. Dr. Hussain has participated in a huge number of national and international seminars, colloquia, and conferences and present research papers there. He also delivers lectures as a resource person and plenary speakers in many national, international seminars and conferences. His area of research interest encompasses the vast area of literature and cultural theories, anthropology, South Asian and African literature, multiculturalism, cultures and Indian literatures in English. He edits a periodical, Light of Africa, published from Center of Studies in African Literature and Culture, Dhaka. He has more than 20 years of teaching experience in graduation and post-graduation level. At present, he is serving as a professor of English in Dhaka City College, Dhaka, and teaching the students of graduate and postgraduate level under the National University of Bangladesh. I am very happy that he is here with us to deliver his enlightening speech on multiculturalism and literature. Thank you. Thank you, sir. Now I request to today's keynote speaker, Dr. Professor Ilham Hussain, sir, to share their views. Hello, everyone. I am Professor Dr. Ilham Hussain from Dhaka, Bangladesh. I wish you all a very good day. I feel honored and privileged to be invited as the speaker by Palus Shikshan Mandal's Arts, Commerce and Science College, IQAC and Department of English, Hindi and Marathi in the online International Interdisciplinary Conference on Multiculturalism in Contemporary Literature. I express my thanks and gratitude to the coordinator, Dr. P.M. Patil, sir. I do express my hearty thanks to Principal, Dr. R.S. Salunke, sir. I feel honored to share this platform with dignified speakers, Professor Dr. Tripti K. Karikatti, Madam, Professor R.S. Saraju, sir, and Dr. Namdev B. Gopat. And I express my gratitude to all the participants for listening to me. Actually, multiculturalism has become a buzzword today, and it has occupied a very important place in contemporary literature. And I think the arrangement of this international conference on this particular topic is very, very relevant to the time. And I think this very conference will generate new ideas and set the researchers to think in a different way, in a different angle. And it will also inspire them to identify their location in multicultural atmosphere
in the atmosphere of transnationalism, in the atmosphere of internationalism. My today's topic of discussion is multiculturalism, a challenge to individual identity. And we know that literature is always contextual, and it emerges out of life. It reacts upon life, and it is also fed by life. Hence, today's literature, irrespective of its location, serves as a metaphorical record of its time, irrespective of boundaries. Due to the rise of corporate economic framework and corporate power structure, literature is going through a lot of significant newness. The paradigm shifts of social realities, refugee problem all over the world, globalization, open market policy, and consequential widespread diaspora have left a deep impact on literature of the post-colonial countries, where multiculturalism and neo-colonialism are moving hand in hand and posing a challenge to the individual, nationalism, and self-identity. Now, in the words of Homi K. Bhabha, quote, the very concepts of homogeneous national cultures, the consensual or contiguous transmission of historical traditions, or quote unquote, organic ethnic communities, as the grounds of cultural comparativism, are in a profound process of redefinition. Unquote. So in the age of, in Bhabha's words, complex interweavings of history and the culturally contingent borderlines of modern nationhood, unquote, transnationalism and internationalism are throwing challenge to the individual identity of any nation. Multiculturalism as one of the major subjects in post-modern space challenges the meta-narrative of monoculturalism, and it is employed by the good number of writers in the contemporary literature of the subcontinent. Salman Rushdie, Amitabh Ghosh, Jhumpa Lahiri, Arundhati Roy, and many other Indian authors have used multiculturalism as their subject matter. So this buzzword, multiculturalism, requires critical perusal on the part of those who critically observe the post-colonial realities. And multiculturalism denotes accommodation of diversity of class, race, gender, language, sexual orientation, ability, and disability in one society. It marks diversity both in domestic and international terrains. It, in post-colonial studies, emerges as a binary opposition to monoculturalistic disposition, which goes hand in hand with hegemonic role of a single culture. And monoculturalism does not recognize diversity. On the other hand, multiculturalism acknowledges diversity and stands against monocentric assimilation. It respects boundaries and at the same time encourages the acceptance of a single culture. Multiculturalism appears to promulgate equal opportunities for minority group within a community. But many critics today look at multiculturalism with suspicion. They blame it to be more theoretical than practical. They also accuse it for its negotiation with the power relations and compartmentalizing the society. So I think multiculturalism is to be reread, is to be deconstructed. Living in post-colonial world,
living in the situation of postmodernity, we have to look at this term with a critical disposition. Identity is never transparent and unproblematic. As I have already said, that multiculturalism is a challenge to individual identity. It's a continuous construction process. Actually, identity is a continuous construction process, shared and negotiated among cultural realities, histories, and aesthetics. A consistent process of negotiation and challenge marks identity, and thus it threatens the claim of quote-unquote cultural identity. In this connection, culture stands out as a discourse of flux and displacement. Standing face to face with globalism, multiculturalism, intersectionality, and liquidity of entity in an era of cyber technology, identity of an individual as well as a race of a nation receives unstable, metamorphic, and even contradictory. That is, quote, unstable, metamorphic, and even contradictory nature, defined with, quote, multiple points of similarities as well as differences, unquote. Again, identity is grounded in the archaeological phenomena and retelling of the past of a race. But migrating nature of the people, information through cyber technology, traffic in the capitals, consumer products and goods cause hybridity and cross-cultural identity of any race and ethnicity, and make us rethink about the rubrics of the nation and nationalism. In the same vein, continuous dislocation of people in the arena of tough competition for survival in the capitalist and corporate economic framework caused by diaspora puts the conception of cultural hegemony and homogeneity in questions. Free and open movement of information through cybernetic media challenges the conception of nationalism and puts forth transnationalism in respect of geopolitical terrains. Multinational corporations and crony capitalism, that is nexus between the capitalists and the politicians, that is power structure, both in domestic and international enterprises, contribute immensely to the construction of multiculturalism and hybridization of identity. The process of diaspora that began with the inception of human race has brought people of diverse religious affiliations, different linguistic backgrounds, and diverse political and economic realities together and created cultural amalgamation. Multiculturalism encourages tolerance to all diverse cultures and thus inspires cosmopolitanism. But at the same time, the hegemonic role of economically powerful races or nations plays a role in introducing cultural imperialism, which by annihilating the local culture tends to otherize the natives. So multiculturalism has a politics to otherize the natives. Even the academia of the third world countries play a crucial role in creating an atmosphere of multiculturalism. A trend of teaching comparative literature in the universities of the third world countries like Bangladesh,
has been initiated with a view to developing dialogic relationship between the first world countries and the third world countries, and promoting cosmopolitanism on the basis of multiculturalism. And due to the influence of the inclusion of comparative literature into the curriculum of the universities, many are applying Western theories to interpret local literature with insignificant care for the local cultural and historical realities. Besides, the methodology followed by different universities and their departments in approaching local literary texts is most importantly tinged with Western pedagogy and hermeneutics. It accelerates multicultural vibes in the exploration of diverse people and their anthropological phenomena. In the universities of America and Europe, third world literature is studied under the title of post-colonial literature. A deliberate intention works behind this branding. It encapsulates third world literature within a particular time frame, out of which it does not have any significant existence. And this time frame begins only from the period of the advent of the colonizers, and it goes on as long as the local people live in contact with their colonizers. It derogatorily implicates that third world literature emerges only out of the impact of the colonial hegemony, other than its own cultural, historical, and political aspects. In this way, third world literature is encapsulated within a stereotypical boundary and branded with a contracted label, and thus it is confined within a theoretical endeavor of branding it as alterity. But in the universities of the third world countries, the departments of comparative literature are including American, European, African, and Asian texts, though they are yet to come out of the hegemonic role of the first world literature. It's undeniable that this inability is an outcome of a series of phenomena, including globalization and its macroeconomic system that holds an integrated world system, though it works with a hypocritical view to compartmentalizing the world and dividing it on the basis of economic distinction as the first world and the third world. Thus, as Edward Said asserts in his seminal book, Orientalism, the world is divided into two unequal halves, Occident and Orient, and, quote, the Orient was almost a European invention, unquote. So Said wrote it in 1976, in 20th century. But now in 21st century, transnational practices throughout the world under the subterfuge of globalization and globalism through the outsourcing of service industries are bringing heterogeneity of cultural and anthropological realities together and deliberately ensuring the hegemonic status of the first world countries, called so on the basis of the economic and mercantile potential. It occurs mostly because of the comparative and innovative accomplishments. That is, it occurs mostly because of competitive and innovative accomplishments in the production of commodities by the bourgeois capitalists. In this connection, the prediction of Marx and Engels is relevant when they proclaim that, now quote, bourgeois class is periodically obliged to revolutionize the instruments and relations of production, and thereby social relations in their entirety, unquote. The bourgeois capitalists revolutionize the instruments of productions from time to time to create an everlasting market
and ensure a constant flow of money into their purse. In the past, this market was confined within a community. But now, in the age of corporate capitalism, the whole world has been transformed into a global market. Revolution in the invention and innovation of machines essentially contribute to the paradigm shift of this market policy, totally based on the mode of capitalist production. And inevitably, this, quote, capitalist production generates a new vicious circle, quote unquote. Exchange of these products among the nations requires participation of the mass from these reservoir of labor. It is more political. It is more political, and I like to say that this very vicious circle, which is produced by the corporate capitalists, this very construction that these capitalist countries produce is more political, and conspicuously appears that the mode of production is intensively related to the whole social system. And this system is more political than economic, because in such a situation, the circle which is formed, that is this vicious circle which is formed, ensures the upper hand position of the first world countries. So it is not possible to conserve the old etiquettes and social values as they are closely related to the mode of production. Political and cultural realities of a nation go through changes, even if the people do not migrate physically from one country to another country, because the vicious circle, quote unquote, constructed by the mode of production, encapsulates everybody of the global market in a polyphonic power structure. Hence, the conception of multiculturalism now is not merely defined by diaspora or migrated body of population. Cyber technology and outsourcing practices contribute immensely to the dislocation and relocation of cultures, and thus to the production of transnational, hybridized, and multicultural identity. Transnationalism has replaced imperialism by creating confusion regarding the locations of center and periphery. Now, for imperializing a geographical area or a nation, commodity, culture, knowledge, and language play a more important role than an army. In the name of democratization of commodity and market, the corporate capitalism transforms everybody, ranging from margin to center, into a consumer, and thus extends its market in every nook and corner of the geographical terrains. For example, in Bangladesh, almost everybody, if wishes now, can use shampoo of some prominent brands because it can be purchased ranging from 3 taka, Bangladeshi currency taka, 3 taka mini pack to more than 300 taka large container. But it never means that. This mode of production and appropriation aims at creating economic and social equilibrium. These brands create connectivity among the mass population, but connectivity does never mean equality. This connectivity is constructed on the basis of the democratization of commodity, not socialization of economy, and it ensures an undisturbed flow of revenues into the purse of the capitalist producers. Thus, the slogan of multiculturalism is a deliberate initiative frequently echoed by the bourgeois capitalists for the expansion of their market.
And this market encircles all the compartments of the society with the distinct purpose of maintaining individual location of the classes in the society regarding their respective economic ability. And economic ability of the transmigrated people began to decrease from 1980s, when internationalization of capital became a fashion of economic enterprises. With the onset of this process, many stable jobs had to encounter insecurity. And, quote, many stable industrial sector jobs had been lost through the export of manufacturing industries and related jobs abroad, frequently to third world countries, unquote. While in such a situation, describing the condition of the USA, Nina Glick-Schiller et al. Assert, I am quoting from their writing, in many large urban areas in the United States, well-paying unionized industrial employment was replaced by service sector and clerical employment. Sweatshops and home work proliferated. The newly created employment was characterized by low pay and little or no benefits or security, unquote. So proliferation of transnationalism as a product of corporate capitalism brings forth a revolutionary change in the construction of the new conception of multiculturalism. It's now in the 21st century about not only diversity, but also compartmentalization in the same community and same nation, because economic discrimination acts as a block on the way to the synthesis among the diverse and discursive pedagogies of multiculturalism. And from the perspectives of the essentialist notion, national and ethnic identity is prominently marked by hybridity and heterogeneity of conceptualizations of location. Now, geographic diversity is not as much powerful as psychological diversities regarding the response of people to varied webs of ethnographical and ethnological phenomena. Thus, compartmentalization is at present more psychological than geographical. So, living in a compartmentalized society dominated by the hegemonic constructions, those who are deprived of the privileges and opportunities provided by bourgeois capitalism create a new, quote, cultural space which calls us new identities, unquote. I have quoted it from Schiller and two other writers. Individual class possesses individual state of awareness. One is different from another in content and disposition. But the sense of nationalism, which is the basis of transnationalism, gives these classes a sense of shared interest, and it brings all of them on a single platform, which is termed as nation state. At present, in the multicultural framework and in a borderless world, nations of the world are living with their individual identity only because of their awareness of the distinct space and location in respect of globalism and globalization. In an age of cybernetic information, an individual's location and identity are defined not by his or her physical presence, but by his or her psychological disposition. Owing to the development of high-speed communication system, hypertechnology, electronic social media such as Facebook, WhatsApp, Instagram, Imo, YouTube, and other popular forms of communication based on internet network. Now, people have formulated a divided self within which they are encapsulated. They are scattered in different places with different cultures and ideological realities, but with a consciousness of their mother culture, history, heritage, and economic realities. Consequently, their multiculturally constructed entity
a homogeneous self constructed by heterogeneous elements of culture and history. It's also true that multicultural atmosphere is not always capable of bringing about synthesis among different cultural groups of people. In Bangladesh, for example, most of the people usually assume the course of their history and heritage in linear, and they stick to a particular religious belief system. And their overconsciousness about their supposed linear, religious, and historical location possesses the risk for them to be detached from the diverse myths, cultural phenomena, belief system, and history, which deserve an extensive consideration in respect of the whole subcontinent. This monolithic disposition raises a wall between them and the other people with different belief systems, ethnic identities, and rituals. A good number of ethnic people living in the hill tracts of Bangladesh are neither Muslims nor Bengalis. The inclusion of their literature, rituals, history, and heritage into the mainstream of the culture of the majority of the people is not conspicuous. Besides a huge number of Bihari diaspora in our country who have not gone back to Pakistan after the liberation war of Bangladesh in 1971, do not have any remarkable presence with their episteme or epistemology and aesthetics in the mainstream of Bangladeshi culture. So this Bihari diaspora is now living in Homi Bhabha's phrase, the third space, that is in betweenness and in the midst of becoming and unbecoming, that is remaining Bihari or becoming Bangladeshi. They are still marginalized, even if the High Court recognized their citizenship in 2008. And at present, multiculturalism deserves more research and critical exploration for many regions, I think. Many universities around the world have launched comparative literature departments and included the texts of different countries in their curricula. It's undeniable that, like other aspects of life, multiculturalism gears up the study of comparative literature in the academia around the world. But the ambivalence found in the formulation and multiculturalism divides people into two major groups. One thinks that multiculturalism promulgates the essence of a liberal and cosmopolitan society, and another presumes that it provokes angst and anxiety by fragmenting a nation and placing different fragments face to face in a conflicting position. Even the comparative literature departments in many universities, which may be interpreted as a hegemonic exercise of dominance in the academic curricula of the third world countries, it can also be marked that almost all these texts of the first world authors are read and taught in English, a language of hegemony of Europe and America. They might be read and taught in translation into the mother tongue of the local learners. Kenyan author Ngugi wa Thiong'o defines this practice of studying literature in European languages as, quote, narrowness in the study of literature, unquote. So Ngugi finds with concern that even in the comparative literature departments of the universities and institutions of his country, only the European languages are exercising their hegemony, even if these institutions are aware of their cultures. So this practice of marginalization of local language and local culture is also widely available within the domestic terrain of the third world countries. Ethnic literature in ethnic languages of ethnic people is not usually found to have a significant space in the curricula of the universities
and educational institutions in comparison with the mainstream literature in the language of the majority of the people. Then can multiculturalism be defined only from international perspective? If the intertextuality and intersection among the local heterogeneous and diverse languages, rituals, traditions, and anthropological realities are not possible, how can the term multiculturalism be sufficiently defined? Rather, amalgamation of local diversities can successfully fight back the hegemony of the first world countries in the name of multiculturalism. Again, in the aura of multicultural realities, the conception of multilingualism is challenged by a single hegemonic language, and there is a chance that the language can segregate the readers from the essentialist and normative knowledge of the culture and political and economic realities, out of which these texts assume their shape. In this way, European languages like English, French, and Portuguese run with the tenet of deculturation of the local readers and take up the quote-unquote role in the Disneyfication of the world cultures, unquote. So in the name of multiculturalism, hegemonic English, like some other European languages, is used as a means of reading and teaching the third world literary texts, and thus, quote, Western hegemonization discourses are very evident in foreign and second language education practices. In the hegemonic atmosphere created by English language while reading third world literature, quote, speakers are unable to establish the compartmentalization necessary for survival of the language variety, unquote. In such an atmosphere, heteroglossia is not encouraged. Besides, non-linear course of history leaves a lot of traumas on the third world countries, and the narrowness stemming out of their traumas limit to a great extent the ability to accommodate multicultural minority rights. And for example, in Bangladesh, which was founded in 1971 on the basis of secularist principles, faces the challenge of accommodating its multicultural minority because of its wide use of religion in politics in the post-liberation phase. Actually, I have quoted from an essay of Mr. Ali Riyaj, Professor Ali Riyaj, a researcher. When a particular belief system dominantly turns into political ideology, it falls into the fog of parochialism to accommodate multicultural minority. So multiculturalism challenges the notion of diglossia. The world today, with multiplicity of unsolvable problems, languages, economic links, and culture is becoming one. But only a few transnationals are deciding the economic, political, and linguistic destinations of the whole world. Only a few international institutions are generating policies for the whole world. Hence, multiculturalism does not truly mean the empowerment of all individual cultures of all nations on the basis of equality. And this is the reason for which Ngugi aptly clarifies this issue in his compelling book, Moving the Center, in the following words. I am quoting from his book, Moving the Center. Those global economic and political processes invariably give rise to cultural links. The evolution of the present global order over the last 500 years has seen the world being dominated by a handful of languages. European languages, of course, and the cultures these have carried will have shaped and dominated in similar ways.
unquote, unquote. In the name of globalization, distant parts of the world have become connected in a historically unprecedented manner. It gives rise to transnational organizations and corporations. By promoting the concept of global culture, it is posing a vehement challenge to the local culture, and thus in the era of post-colonialism, a form of recolonizing mission of the capitalist countries is rampant, especially in the third world countries. Capitalist countries have brought about a revolution in the bourgeois mode of production and transformed the whole world into their market. They are promulgating the terms such as world literature, world culture, and multiculturalism and transculturalism, with a view to ensuring their hegemonic location among the economically backward nations. Globalization and multiculturalism go hand in hand in the 21st century. And, quote, much of 21st century nationalism, it can be argued, is shaped by the current crisis of globalism. I have quoted it from Shashi Tharoor's book, The Idea of Belonging, that is a very famous book written by Shashi Tharoor. But the concepts of globalization and cosmopolitanism are running with the intention of exploiting the privations of the poor. In this connection, Shashi Tharoor, in his seminal book, The Battle of Belonging, actually, this is the book that I wanted to mention before, The Battle of Belonging, argues Shashi Tharoor in this book, quote, in the wake of globalization, economic and political backlash is straightforward, unquote. So even in the developed countries, resentment and rage among the poor and unemployed people are increasing because they have started thinking at the scopes of employment created by globalization and cosmopolitanism have gone to the people of developing countries like China, India, Bangladesh, and some African countries. Thus, the slogan of multiculturalism can't ensure the panacea of the maladies of compartmentalization, economic, political, cultural, and linguistic discrimination, and its consequential resentment and race. And in such a complicated situation, the masses who look upon themselves to be the victims of new emerging conditions usually suspect the terms, quote, I'm again quoting from Shashi Tharoor's book, The Battle of Belonging, cosmopolitanism, multiculturalism, and secularism in the name of cultural rootedness, religious or ethnic identity, and nationalists' authenticity, unquote. So multiculturalism in this way appears to be a threat to not only individual, but also national identity of the people living in the contact zones, quote unquote, contact zones, where varied cultures impact on one another. And Cuban ethnologist in this regard, Fernando de Ortiz, is unwilling to call this process of mutual influence, that is deculturation, quote unquote, deculturation. He rather coins this term as, quote unquote, transculturation. So Ortiz believes that culture is synthetic and influence is not only on the part of the metropolis. This influence is two-sided, but it is true that metropolis is never ready to leave any stone unturned to subjugate the third world countries. They practice it not by arms, as they did during the colonial period. Now in post-colonial period, they are doing it, imposing their linguistic, cultural, economic, epistemic hegemony in the name of globalization, in the name of multiculturalism, transnationalism, and internationalism. In this way, the world is still divided into center and margin. Thus, a chronic ambivalence characterizes the location and identity in the multicultural society.
Multiculturalism has challenged the primordial conception of identity, that it is defined by the individual cultures and societies. In the past, it was a very common belief that if a person can't speak Bangla, he will not be called a Bangladeshi. And if a person doesn't speak English, he will not be called a British. But now people consider the idea of identity as a construct, quote unquote, as a construct, characterized by hybridization and intertextuality among diverse phenomena. Hence, transnationality is challenging the idea of nationality. A man in this era lives in a particular geographical area, but his mind always travels in every corner of the world, and he lives in constant process of taking and giving. Development in one corner of the world impacts the other parts of the world, directly or indirectly. The collapse of American share market, or New York Stock Exchange, or the recent Russian invasion in Ukraine impacts the world economy, and all the nations have to face the scorching impact of recession. Dialectical connectivity exists among the people of different social groups, but this dialectical communication has made them strong and at the same time weak. Social groups now constantly reform and constitute themselves in open boundaries. Here lies its strength. On the other hand, in the multicultural environment, the fabric of the social life has seriously been disrupted as it propagates a collage self with heterogeneity and gives rise to instability, unrest, uncertainty, and insecurity. Thus, this continuous process of becoming and unbecoming invariably gives birth to chronic malady of angst and anxiety, from which the globalized world cannot become totally free. So I think this is the problem of multiculturalism, and this is the politics practiced by multiculturalism. And I believe that this problem of multiculturalism is to be faced or confronted with the development of a discourse. For example, we have to approach our literature with our own theoretical framework. If we borrow the theoretical framework from the Western world and approach our literature, then it may have the risk of being stereotyped. And similarly, if we apply or if we utilize the economic framework of the Western world, that may also stereotype our economy. So multiculturalism is a term introduced by the Western world, and this term is to be looked into critically and with suspicion. And I have already said that multiculturalism has made us strong because it has offered us a broad spectrum standing in which we can see ourselves, we can judge ourselves, we can identify our locations, and at the same time, it has also compartmentalized us. So we have to be critical to this term, and we have to develop a counter discourse against this multicultural discourse. And then I think that will be a fit response to multiculturalism. Otherwise, in post-colonial world, we will have the chance or risk of being neo-colonized or recolonized by all these buzzwords or terminologies introduced or advertised or advocated by the Western world or the first world countries. So let me stop now. I like to thank everybody who
listens to me. And I once again express my hearty thanks and gratitude to the organizers for inviting me to this great international conference. And I'm really happy to be with all of you, all of the dignitaries, all the respected people. And I express my best wishes for everybody. And from the on behalf of the people of Bangladesh, I wish you very good luck. And I am really happy to be a part of your arrangement today. So thank you very much and all the best. Thank you, sir, for your views on multiculturalism and personal identity. Your speech would be truthful for teachers and research scholars. Now I request to Dr. S.R. Parlekar sir to introduce today's resource person. नमस्कार. महाराष्ट्रातल्या सांगली जिल्ह्यातील कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय पलूस या महाविद्यालयाच्या आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रामध्ये मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या विषयाचं समकालीन मराठी साहित्यातील बहुसांस्कृतिकता हा विषय घेऊन सर्व संशोधक विद्यार्थ्यांच्यासाठी, प्राध्यापकांच्यासाठी हे जे राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्र घेण्यात आलेलं आहे, या चर्चासत्रामध्ये खरं तर फार सुंदर पद्धतीनं चर्चा होणार आहे. मध्ययुगीन मराठी साहित्य, लोकसाहित्य, लोकनाट्य किंवा एकूणच या सर्व साहित्यातली बहुसांस्कृतिकता आपल्याला निबंधाच्या रूपाने वाचायला मिळणार आहे. आणि याच्यासाठी जी काही रिसोर्स पर्सन नेमण्यात आलेली आहे किंवा याच्यासाठी जे काही वक्ते आहेत त्या वक्त्यांचं मार्गदर्शन आता आपल्याला फार छान पद्धतीने ऐकायला मिळणार आहे. असेच मराठी विषयातले एक तज्ज्ञ आणि डॉक्टर नामदेव विक्रम गपाटे, सहाय्यक प्राध्यापक, मराठी विभाग, बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटी वाराणसी, या प्राध्यापकांचं विवेचन आपल्याला फार सुंदर पद्धतीने ऐकायला मिळणार आहे. त्यांनी आपलं स्वतःचं संशोधन पूर्ण केलेलं आहे. त्यांचा अभ्यास विषय जो आहे तो मध्ययुगीन मराठी साहित्य, मराठी साहित्य समीक्षा या विषयावर सातत्यानं त्यांनी लेखन केलेलं आहे. तर 17 ऑक्टोबर 2015 पासून मराठी विभागामध्ये बनारस युनिव्हर्सिटीमध्ये ते मराठी विषयामध्ये अध्यापन करतात. पदवी, पदव्युत्तर संशोधक विद्यार्थ्यांना अध्यापन आणि मार्गदर्शन करण्याचं काम सातत्यानं या विद्यापीठामध्ये त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू असतं. विद्यापीठ अनुदान आयोग नवी दिल्ली यांच्याकडून त्यांना PhD साठी संशोधन रिसर्च फेलोशिप जी आहे ती मिळालेली आहे. असे हे नामदेव गपाटे एक तरुण संशोधक आणि प्राध्यापक आजच्या या आपल्या वक्ते म्हणून आपल्याला लाभलेले आहेत. त्यांचं मी या ठिकाणी खरं तर स्वागत करतोय. मराठी विषयामध्ये ते PhD तर त्यांनी केलेलीच आहे, MA तर केलेलंच आहे, पण नेट सेट परीक्षाही त्यांनी पास केलेली आहे. खरं तर संशोधनाच्या क्षेत्रात सरांचं काम फार प्रगल्भ आणि चांगलं असलेलं आपल्याला दिसतं. परिवर्तनाचा वाटसरू मार्च 2013 मध्ये त्यांनी जो शोधनिबंध लिहिलेला आहे त्याच्यामध्ये D.K. बेडेकर यांचं मार्क्सवादी विचारांचं आकलन कशा पद्धतीचं आहे. त्यानंतर परिवर्तनाचा वाटसरू याच्यामध्येच ऑक्टोबर 2013 मध्ये त्यांनी भालभोळे यांचं समीक्षा लेखन याच्यावरचाही त्यांचा शोधनिबंध फार चांगल्या पद्धतीनं गाजलेला आहे. त्यानंतर समाज प्रबोधन पत्रिका ऑक्टोबर 2012 मध्ये त्यांनी फार सुंदर पद्धतीनं लेख आणि लेखन सूची याच्या विषयीचं विवेचन ची मांडणी जी आहे ती फार चांगल्या पद्धतीनं एकंदरीत केलेली आहे. शब्दरुची या मासिकामध्ये त्यांनी फेब्रुवारी 2018 मध्ये महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक आणि भाषिक अनुबंध या विषयावरचा शोधनिबंध लिहिलेला आहे. शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर इथल्या दूरशिक्षण केंद्रामध्ये MA चा जो अभ्यासक्रम असतो त्याच्यामध्ये सुद्धा सर सातत्यानं लेखन करीत असतात. असा एक तरुण प्राध्यापक या बनारस हिंदू विश्वविद्यापीठामध्ये महाराष्ट्राचं प्रतिनिधित्व करतोय असं मला नेहमी वाटतं. आणि त्यांचं विवेचन एकूणच समकालीन मराठी साहित्यावरचं विवेचन आपल्याला ऐकायला मिळणार आहे.
विविध क्षेत्रामध्ये त्यांचं काम आहे आणि परवाच त्यांनी या विद्यापीठामध्ये जवळजवळ 400 मुलांच्या MPSC OPSCच्या परीक्षेच्या संदर्भातल्या काही मुलाखती आहेत त्या सातत्यानं घेतलेल्या आहेत. म्हणजे सातत्यानं विद्यापीठामध्ये चाललेल्या कामामध्ये सर सक्रियपणे सहभागी होतात. आजच्या आपल्या या आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रामध्ये सर मराठी विषयाला अनुसरून जे बोलणार आहेत ते मराठी साहित्यातील सांस्कृतिक वातावरण, बहुसांस्कृतिकता किंवा समकालीन मराठी साहित्यातलं सांस्कृतिक महत्त्व ते आपल्यासमोर मांडणार आहेत. आपण ते शांतचित्तानं ऐकावं अशी आपणा सर्वांना विनंती आहे. धन्यवाद. Thank you, sir. Now I request to our resource person, Dr. Namdev Ghapate, sir, to share their valuable views. नमस्कार. कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय पलूसचे प्राचार्य साळुंखे सर, समन्वयक पाटील सर, पार्लेकर सर आणि या आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रामध्ये सहभागी असलेले शिवाजी विद्यापीठाच्या इंग्रजी विभागाच्या विभाग प्रमुख करिकट्टे मॅडम, ढाका येथून आपल्यामध्ये उपस्थित असलेले हुसेन सर, हैदराबाद येथून आपल्यामध्ये उपस्थित असलेले सरजू सर आणि इतर साहित्य आणि संस्कृती याचा विचार करताना साहित्य, संस्कृती, समाज यांचे आंतरसंबंध हे बहुआयामी व सेंद्रिय स्वरूपाचे असल्याचे आपल्याला दिसून येते. साहित्याचे आशयद्रव्य आणि आकृतिबंध संस्कृतीमधूनच आकार घेत असतात. हे आकृतिबंधच पुढे संस्कृतीचा भाग बनत असतात. अशा प्रकारे साहित्य आणि संस्कृती यांचे सहसंबंध हे जैविक स्वरूपाचे असतात. म्हणजेच साहित्यकृती ही एक संपूर्ण सांस्कृतिक घटना असते. साहित्यादी कला प्रकाराच्या माध्यमातूनच संस्कृती वहनाची प्रक्रिया निरंतरपणे चालू असते. संस्कृतीच्या प्रवाहीपणातच तिच्या जिवंत असण्याची व जिवंत राहण्याची लक्षणे सामावलेली असतात. साहित्यकृती समकाळातील राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक घटनांची संबंध ठेवून असते. साहित्य निर्मिती ही माणसाच्या विस्तृत वांशिक सांस्कृतिक नकाशाचा एक भाग म्हणून ती अवतरत असते. एका साहित्यकृतीवर इतर अनेक पारंपरिक कला, साहित्यकृती, वर्तमानकालीन घटना, ऐकलेले, पाहिलेले, आवडलेले, उसने घेतलेले अशा कितीतरी आशयद्रव्यांचे प्रभाव सरळ, उलटे, तिरपे पडलेले असतात. हे प्रभाव नैसर्गिकरित्याच तिचा भाग म्हणून अवतरलेले असतात. अनेक फुलातले मधाचे कण जसे मधाच्याची सांस्कृतिक दृष्टी बहुजिन्सी स्वरूपाची असते असे आपल्याला दिसून येते. त्यामुळे सांस्कृतिक व्यवहाराचे बहुजिन्सी स्वरूप समकाळातील मराठी कादंबरीने पुढे आणल्याचे आपल्याला दिसून येते. व्यामिश्र व गुंतागुंतीच्या समाज संस्कृतीचे विस्तृत चित्रण करण्याच्या कादंबरीच्या क्षमता इथे अधोरेखित झाल्याचे आपल्याला दिसते. त्याचबरोबर या अभ्यासामुळे संस्कृती विचारातून कादंबरीचा अन्वयार्थ लावण्याचा व आकलनाच्या अधिकच्या शक्यता उपलब्ध करण्याचाही मानस दिसून येतो. आज समाजाच्या वेगवेगळ्या स्तरातील लेखक कादंबरी लिहित आहेत. अनेकविध जीवनक्षेत्रे कादंबरीच्या संरचनेने सामावून घेतलेली आहेत. या लगतच्या काळातील कादंबरीतील सांस्कृतिक पर्यावरणाचे स्वरूप निहाळण्यापूर्वी या काळाला प्रभावित करणाऱ्या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजकीय घडामोडींचा निर्देश करणे मला इथे आवश्यक वाटते. 1990 नंतरचा काळ हा खऱ्या अर्थाने जागतिकीकरणाचा अंमल सुरू झालेला काळ आहे. या काळात नव उदारमतवादी धोरणाने भांडवलशाहीच्या नफेखोरीचा समाजाच्या सर्व स्तरात शिरकाव झालेला दिसतो. बाजारू संस्कृती स्थिर होण्याचा हा काळ आहे. आपल्याला या काळात औद्योगिकरण आणि सेवा क्षेत्राची झपाट्याने वाढ होताना दिसते. नागरीकरण रेट्यात खेडी शेती समूह प्रभावहीन होण्याचा हा काळ आहे. याच काळात राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होऊन धर्म व जात यांचा राजकारणातील प्रादुर्भाव वाढलेला दिसतो. खुल्या आर्थिक धोरणाने या काळातील समाज जीवनातील सांस्कृतिक जीवन व्यवहार प्रभावित केला आहे. जागतिकीकरणाच्या या काळात भांडवलशाहीचे दूरगामी परिणाम समाज जीवनावर झाल्याचे दिसून येते. फक्त ग्रामीण किंवा नागर अशी सरळ थेट विभागणी करणे आता शक्य नाही. समाजाच्या अनेकविध समूहांनी आकारलेले समूह संस्कृतीचे अंडरकरंट्स आता साहित्यात दिसत आहेत. व्यक्तीचे स्वतंत्र अस्तित्व मान्य करण्याची आधुनिक जीवनदृष्टी जाऊन
येथे धर्म आणि जात यांचे महत्त्व वाढून झुंडीचा अवकाश ठळक होताना दिसतो आहे. कोणतेही धार्मिक उपक्रम सार्वजनिक करण्याकडे, उत्सवी करण्याकडे भर राहिला आहे. धर्मासहित सगळ्या गोष्टी व्यवहारवादाच्या मार्केटच्या केंद्रस्थानी आल्या आहेत. सामाजिक आणि धार्मिक दृष्ट्या बाजाराधिष्ठित मूल्यकल्पनातून हा सांस्कृतिक व्यवहार आकारला आहे, हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राच्या विस्तृत भूप्रदेशातील पोटसमूह पोटसंस्कृतीतून आपल्याला लेखकांनी या काळातील कादंबरी लेखन केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे समाजाच्या सर्व स्तरातील समूह संस्कृतीचे, साहित्यविषयक कल्पनांचे, अभिरुचीचे पसरलेपण या कादंबरीतून प्रतिबिंबित होताना दिसते. साहित्याचा सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यातून विचार करताना ही उपलब्धी महत्त्वाची ठरते. या काळातील कादंबऱ्यांकडे पाहण्याची, तिचा अन्वयार्थ लावण्याची संस्कृतीवादी दृष्टी ही बहुजिन्सी स्वरूपाची असावी लागते. त्यानुसार आजच्या समाजातील कादंबरीतील सांस्कृतिक पर्यावरण वेगवेगळ्या कोनातून अभ्यासणे महत्त्वाचे ठरते. कादंबरीचा संहिता म्हणून अन्वयार्थ लावण्यासाठी तिचे नेमकेपणाने विश्लेषण होणे आवश्यक आहे. संहितेचे आकलन करण्यासाठी संस्कृती अभ्यास महत्त्वाचा ठरतो. कादंबरीतील भावविश्वाचा हा संस्कृती सापेक्ष मूल्यनिर्णय नसून सांस्कृतिक पर्यावरणाचे रूप नेमके काय आहे याबद्दलची काही निरीक्षणे आहेत. यासाठी वास्तववादी, देशीवादी, ऐतिहासिक, स्त्रीवादी, रंजनवादी हे प्रवृत्तीभेद विवेचनाच्या सोयीसाठी करता येतील. कमी अधिक प्रमाणात या काळातील सर्वच कादंबऱ्यांमधून जागतिकीकरणाचे प्रभाव संचित आकारलेले दिसून येते. तरीही जागतिकीकरण आणि भांडवलशाहीच्या प्रभावाने गजबजलेल्या या काळात आपल्याला प्रतिसाद देणाऱ्या, या काळाचे संस्कृती संवेदन नोंदवणाऱ्या कादंबऱ्या म्हणून रंगनाथ पठारे यांची नामुष्कीचे स्वागत, दीनानाथ मनोहरांची कबीराखडा बाजार में, राजन गवस यांची बळीचा, नंदा खरे यांची उद्या, प्रवीण बांदेकर यांची चाळेगत व उजव्या सोंडेच्या भावल्या या कादंबऱ्यांचा उल्लेख करावा लागतो. या काळाचे डोळस भान इथल्या समाज संस्कृती बदलाचे पडसाद कवेत घेत बदललेल्या संस्कृती भानाचे चित्र कादंबऱ्यांनी दाखवून दिले आहे. 21व्या शतकातील नवभांडवली जगाने आणलेली संस्कृती इथल्या समाज व्यवस्थेत काय करू पाहते हे भांडवली जग आणि त्यातून आकारणाऱ्या संस्कृतीचे मूल्यभान हाच या कादंबऱ्यांचा गाभाभूत विषय राहिला आहे. बदलत्या सांस्कृतिक पर्यावरणातून आकारणाऱ्या अनुभवाचे, संवेदनांचे लेखकाने केलेले मूल्यमापन अन्वयार्थ वाचकाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. रंगनाथ पठारे हे या काळातील मराठी कादंबरीतील महत्त्वाचे नाव आहे. पठारे यांच्या कादंबरीचा रोख सतत वर्तमान काळाकडे राहिला आहे. वर्तमानातील मराठी संस्कृतीचे खोलवरचे आकलन पठारे यांच्या कादंबऱ्या नोंदवताना दिसतात. मराठी समाजाच्या बदलत्या राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक धारणांचे सजग भान त्यांच्या कादंबऱ्यांमधून व्यक्त होताना दिसते. नामुष्कीचे सोबत या कादंबरीमध्ये समाज वास्तवातील सांस्कृतिक व्यामिश्रता पकडताना त्यामधील विसंगतीसह उपरोधिक पद्धतीने मूल्यात्मकतेचे काय झाले याचे वास्तवपूर्ण चित्र रेखाटले आहे. ते जमालुद्दीन कासार, एस.टी. ड्रायव्हर, गोरोबा शिंपी, प्राचार्य, नेल्सन मंडेला, रॉबर्ट्स मुगाबे, वि.म. दांडेकर अशा वेगवेगळ्या स्तरातील कल्पित आणि वास्तवातील व्यक्तींच्या जीवनकथा सांगतात. हे सांगणे चिंतनाच्या पातळीवर जाणारे आहे. त्या पात्राच्या अनुषंगाने येणारे संस्कृती दर्शन हे तुकडेवजा जीवनपटाचा एकत्रित विचार केला तर वर्तमानातील सबंध मानवाच्या संस्कृतीपट उभा राहतो. एकूण मानवी संस्कृतीचे निरनिराळ्या स्तरावर कार्यरत संस्कृती घटकांचे तुकड्या तुकड्यांनी परंतु समूह दर्शन या कादंबरीतून घडते. राजन गवस यांच्या कादंबऱ्यामध्ये कृषीजन संस्कृतीचे दिग्दर्शन आहे. शेती हा समूहाने करण्याचा व्यवसाय आहे.
ती जगण्याची स्वतंत्र अशी रीत आहे. शेतीच्या गरजेतून येणारी समूह संस्कृतीची घडण राजन गवस यांच्या कादंबरीतून येते. बळीचा मध्ये कृषी समूहाची जाणीव केंद्रित आहे. व्यक्तिवादी मराठी कादंबरी परंपरेला नाकारताना व्यक्तीच्या समाजसंबंधी जगण्याला प्राधान्य देत व्यक्तीच्या विकासवाढीला कृषीजन समूहाची संस्कृती काय करते, एकूण मानवी जगण्यात ही कृषीजन समूहाची संस्कृती कोणते मूल्यभान देते, असा मानवी जीवन तपासण्याचा मूल्य संस्कृतीचा व कृषी संस्कृतीचा कोणता मूल्यविचार या ठिकाणी स्पष्ट होतो, हे राजन गवस सर यांच्या कादंबरीतून प्रतिपादित झाले आहे. याचबरोबर जागतिकीकरण आणि भांडवलशाहीच्या काळात आणि नफेखोरीच्या जगात प्राणीमात्रांसह मानवी अस्तित्वावर आणि त्याच्या भूजैविक असण्यावरच कोणती आक्रमणे येत आहेत, याचा वैचारिक धारणांसह महत्त्वपूर्ण शोध राजन गवस यांनी आपल्या कादंबरीतून घेतला आहे. प्रवीण बांदेकर यांच्या चाळेगत आणि उजव्या सोंडेच्या भावल्या ह्या काळातील महत्त्वाच्या कादंबऱ्या आहेत. नवभांडवली जगाने धर्माला अनुसरणारे राजकारण हाताशी धरून कोकणच्या भूमीतला समाजवाद कसा संपवला आणि आपल्या जैव संसाधने ओरबाडण्याची लुटीची प्रक्रिया कशी चालू ठेवली, याचे भेदक चित्रण चाळेगतमध्ये येते. तर उजव्या सोंडेच्या भावल्या ही कादंबरी भारतीय समाज वास्तवात समकाळात दिसणाऱ्या धार्मिक संस्थांबद्दल तसेच त्यांच्या कारवायांबद्दल पद्धतशीरपणे चालवलेल्या धर्मांध मूलतत्ववादी प्रचाराबद्दल उघडपणे बोलते. त्यांनी सनातन्यांकडून जे सामान्य माणसाच्या वर्तनाचे मनोनियंत्रण करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत याची पोलखोल केली आहे. हे करत असताना या सर्व वास्तवाला भारित करणारी धर्मसत्ता राजसत्तेचे हितसंबंध उघड केले आहेत. प्रत्यक्षातील या संस्थांची कार्यपद्धती यातून दृष्टीपथात येते. धार्मिक धर्मसंस्था व धर्मांध प्रवृत्तीचे सामान्यीकरण करण्यात बांदेकर यशस्वी झाले आहेत. धार्मिक असणारा माणूस धर्मांध कसा होईल याकडे धर्मरक्षण करणाऱ्या संघटना कार्यरत आहेत. बुद्धिजीवी वर्ग या संघटनांचे कारनामे काही एक भूमिका घेऊन उघडे करत होता, परंतु नेमक्या या काळात तोच या भांडवली जगताच्या भौतिक सुखसोयींनी चंगळवादी आत्ममग्न झाला आहे. तसा तो राहील याची व्यवस्था गेल्या 25-30 वर्षातील सांस्कृतिक जगताने केली आहे. त्याचे नेमके सुतोवाच या कादंबरीतून केले आहे. या कादंबऱ्यांचे संस्कृती चित्रणाचे स्वरूप पाहिले तर भूतकालीन अभिजात संस्कृतीचे गौरवीकरण न करता वर्तमानात संस्कृतीची वहिवाट काय राहील याचे सूचन या कादंबऱ्यातून केलेले दिसून येते. खाजगीकरणाच्या बाजारू शिक्षणातून येणारी बेरोजगारी, शिक्षित तरुणाचे दुःख मांडणारी सदानंद देशमुख यांची 12 मास ही कादंबरी या दृष्टीने खूप महत्त्वाची आहे. भारतीय शेतीचे प्रश्न मुळातून समजून घेत शेतकऱ्याच्या शिक्षित पिढीची दारुण चित्रण करणारी 12 महिने आतबट्ट्याची ठरलेली शेती आणि अभावग्रस्तेतून येणारा संस्कृती व्यवहार या कादंबरीतून आलेला आहे. शिक्षित पिढीच्या वाढलेल्या अपेक्षांचे शहराच्या तुलनेत खेड्यातील विवंचनेचे वेगळेच दर्शन या कादंबरीतून दिसून येते. सीताराम सावंत यांची देशोधडी ही कादंबरी खेड्यातील नव्या पिढीच्या विशेषतः शिक्षित पिढीचे शहराकडे होणारे स्थलांतर विस्थापनाचा विषय हाताळणारी आहे. संवेदनशील व्यक्तीला गावगाड्यात आपला सर्व स्तरातून कोंडमाराचे दाहक अनुभव होतो. त्यासाठी गावातील हिडीस राजकारण, निसर्गाच्या लहरीपणावर अवलंबून असणारी शेती, आर्थिक उन्नतीसाठी आवश्यक असणारे पर्याय आणि या पर्यायांचे तिथं नसणं, या सगळ्या पार्श्वभूमीवर गावातील तरुणांचे होणारे विस्थापन मांडणारी ही कादंबरी आहे. रमेश इंगळे उतरातकर यांच्या निशाणे डावा अंगठा आणि सर्व प्रश्न अनिवार्य या कादंबऱ्यातून शिक्षणातील मूल्यऱ्हासाचे वेगळे संस्कृतीभान आल्याचे आहे. कृष्णात खोत यांच्या गावठाण, रौंदळा, झडझंबड या कादंबऱ्या प्रकाशित आहेत.
कृषी समूहाचे परिसर सापेक्ष संस्कृती भान हे त्यांच्या कादंबरी लेखनाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. ही कादंबरी कृषी संस्कृतीतून आलेल्या परंपरेला मान्यता देते, वर्तमानाची चिकित्सा करते. त्यामुळे या कादंबऱ्यांचे देशीवादी आकलन नोंदवता येते, कारण देशीवाद हा साहित्याचा सांस्कृतिक विचार करणारा दृष्टिकोन आहे. या अनुषंगाने या कादंबरीचे मूल्यमापन स्वतंत्र करता येते. पोटसंस्कृतीचे, पोटसमूहाचे दिग्दर्शन करणारे कादंबरी लेखनही या काळात झाले. अशोक पवार यांच्या इळणमाळ आणि पडझड या कादंबऱ्यात भटक्या समाजाच्या अधम पातळीवरील जगण्याचे वास्तवपूर्ण चित्रण येते. इळणमाळमध्ये बेलदार समाजाचे सर्व व्यवहार दाखवले आहेत. पालावरच्या जगातील लहान मुलांचे भीक मागणे, दारू गाळणे, बायकांना नवऱ्यांनी मारणे, पोलिसांनी कोणत्याही खोट्या गुन्ह्यात गोवणे, गावच्या कडेला संसार मांडणे, लादलेल्या सततच्या स्थलांतरित जगण्यातून आलेले हे भटकेपण, अंधश्रद्धा, व्यसनाधीनता, शिक्षणाचा अभाव यातून आलेले मरणासन्न भटक्या समाजाचे संस्कृती व्यवहार या कादंबरीतून येताना दिसतात. मेलेल्या माणसाला तेथेच पुरून आत्म्याला मोक्ष मिळण्याचे केले गेलेले विधी, सुंदरता हा स्त्रियांना लाभलेला शाप ठरावा अशी परिस्थिती, जीवन मरणाच्या कडेलोटावरील समूह संबंध येथे भटक्या समाजाचे संस्कृती व्यवहार रेखाटले आहेत. एकूणच अशोक पवार यांचे कादंबरी लेखन भटक्या समाजाच्या जगण्याचा एक सांस्कृतिक दस्तऐवज आहे असे म्हणता येते. आनंद विंकर यांची अवकाळी पावसादरम्यानची गोष्ट ही या काळातील महत्त्वाची कादंबरी आहे. दुःख विसरण्याची, त्याला मागे सारण्याची, रोजच्या जगण्यात मिसळून जाण्याची, पुन्हा श्रमाला जोडून घेण्याची पर्याय कष्टकरी शेतकरी समाजापुढचा असतो. या कादंबरीतील आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या मुलीला तिची धुरपात ती म्हणते, खरंय लेकी, रानच माणसाला पोटात घेतं, काम सांगतं, दुःख विसरायला लावतं, श्रमाला जोडून सुखदुःखे सामावून घेण्याचे उच्च कोटीचे श्रमसंस्कृतीचे मूल्यभान या कादंबरीतून प्रकटते. भालचंद्र नेमाडे यांची हिंदू जगण्याची समृद्ध अडगळ ही या काळातील विशेष चर्चेत राहिलेली कादंबरी आहे. तिच्यातील अनेक आवाजीपणामुळे तिचे अवाहकत्व कायम आहे. समूह संस्कृतीचा व्यापक पट कवेत घेण्यातून महाकाव्य सदृश मूळ रूपाकडे कादंबरी पुन्हा प्रवेशित झाली आहे. खंडेराव यांचे मोरगाव ते सिंधू संस्कृतीपासूनचा मोठा कालावकाश यामध्ये सामावला आहे. कृषी संस्कृती कशी विकसित होत आली, या संस्कृतीच्या घडणीतील भूसांस्कृतिक परिमाणे तपासली आहेत. हिंदूमध्ये शेतकरी समूहाचं जगणं केंद्रस्थानी आहे. कुणब्याने निर्मिलेल्या गावगाड्याची व्यवस्था एकमेकांच्या साह्याने विकसित होत आली आहे. औद्योगिकरणाच्या आणि नागरीकरणाच्या झपाट्यात कोणते स्थित्यंतर ग्रामसंस्कृती अनुभवते याचेही वास्तवदर्शी चित्रण यामध्ये आले आहे. सिंधू संस्कृतीच्या उगमापासून हा सर्व पट कादंबरीत रिचवताना या समूहाच्या लोकजीवनाचे आख्यान बनले आहे. कृषी संस्कृतीतील मूल्य व श्रममूल्यांचा समुच्चय पानोपानी दाखवून बहुजन श्रमसंस्कृतीचे स्वरूप अधोरेखित केले आहे. बहुजन संस्कृतीच्या गुलामीला कारण ठरलेली ब्राह्मण अधिसत्तावादी संस्कृती या बदललेल्या आकलनातून पुरुषसत्ताक सांस्कृतिक हितसंबंधाचे राजकारण उघड केले जाऊ लागले आहे. आपल्या सांस्कृतिक अवकाशात स्त्रीला कोणत्या बाजू हव्या आहेत आणि कोणत्या नको याचा समाजाधारित निर्णय होत असला तरी आपल्या स्त्रीमनाचे नेमके काय होते याचे मात्र भान त्यामध्ये आले आहे. नवोत्तर काळातील स्त्रियांचे कादंबरी लेखन संस्कृती आकलनाच्या संदर्भात विचारात घेताना 80च्या दशकातील त्यांचे कादंबरी लेखन प्रकाशित झाले त्या गौरी देशपांडे व आशा भगे याही या काळात महत्त्वाचे कादंबरी लेखन करताना दिसतात. कुटुंब, विवाह, मातृत्व आणि स्त्री पुरुष संबंधाने येणाऱ्या समाज मान्यतेच्या अंगाने विचार करावा लागतो. मातृत्व, आई आणि मूल या संबंधाने बदलाच्या धूसर शक्यता या स्त्रीच्या कादंबरी लेखनात दिसतात.
वैध मातृत्वाचे गौरवीकरण, स्त्रीच्या जन्माची सार्थकता याला छेद जाताना दाखवले आहे. बदलत्या आर्थिक सामाजिक परिस्थितीत कुटुंब व्यवस्थेलाच हादरे बसण्याच्या या काळात स्त्रीच्या कादंबरी लेखनात एकटीचेच कुटुंब इथपर्यंतचा प्रवास आपल्याला दाखवता येतो. भारतीयांनी सांभाळलेल्या पुरुषसत्ताक कुटुंब पद्धतीत व्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रत्यक्षगत आविष्कार कसा असू शकेल? कुटुंब संस्था टिकवण्याच्या नावाखाली स्त्रियांनी सहन केले पाहिजे व आपल्या आत्मसन्मानाचा बळी दिला पाहिजे या गोष्टी स्त्रिया आता नकार देताना दिसत आहेत हे या कादंबरीतून दिसून येते. मराठी कादंबरीतील वास्तववादी धारा प्रमुख राहिल्याने वर्तमान काळातील समाज चित्रणात अधिक भर पडली आहे. या वास्तवाला भारित करणारी समाज व्यवस्थेत सांस्कृतिक संचित नावाची गोष्ट कार्यरत असते. त्याचे भान बहुतांश कादंबरीकारांना नाही. जागतिकीकरण, बहुसांस्कृतिकता वाढीला लागते. संस्कृतीचे वहन गतिमान होते. सांस्कृतिक जगताच्या तळाशी भांडवलशाही नवी मूल्यव्यवस्था आहे. त्यामुळे सांस्कृतिक एकारलेपणाचे परिमाण संपूर्ण मानवी जीवनाला व्यापून राहिले आहेत. याचे भान मराठी कादंबरीत दिसत नाही. परंपरेच्या नावाने गळे काढत लिहित राहिल्याने नवे कसे स्वीकारावे याचा गोंधळ उडालेला दिसतो. सांस्कृतिक वैविध्याच्या आपल्या समाजात संस्कृतीच्या सहअस्तित्वाची इतरांनाही समान भूमी उपलब्ध असण्याची जाणीव रुजलेली आहे. या जागतिकीकरणानंतरची मूल्यव्यवस्था व मूलतत्ववादी धारणा जोरकस होण्याच्या काळात बहुसांस्कृतिक वादाचे नेमके काय होते याचा शोध फारसा झालेला दिसत नाही. दृश्य स्वरूपातील समाज वास्तवाची तपशिलात वर्णने करणाऱ्या मराठी कादंबरीत सामाजिक स्वरूपाच्या घडामोडी विपुल प्रमाणात चित्रित होतात. अशा कादंबऱ्यांची संख्या अधिक आहे. समाज वास्तवाला बळ देणाऱ्या परंपरा, सांस्कृतिक धारणांसंचित समाजाच्या सर्वव्यापी वर्तमान जगण्यातून आकार घेणाऱ्या सांस्कृतिक व्यवहाराकडे झेपवण्यात या कादंबरीकारांना मर्यादा पडतात. समाजाच्या अंतःस्तराच्या सामाजिक सांस्कृतिक जाणीवा व्यक्त करणे ही कादंबरी साहित्य प्रकाराची पूर्व अटच आहे. संबंध समाजाचा संस्कृतीपट कवेत घेण्याची कादंबरीची क्षमता असते. मराठीमध्ये भालचंद्र नेमाडे, रंगनाथ पठारे, राजन गवस, प्रवीण बांदेकर आणि नंदा खरे यांच्या कादंबऱ्यांचा अपवाद वगळता असे जोरकस प्रयत्न झाल्याचे दिसत नाही. 90 नंतरच्या कादंबरीतील सांस्कृतिक पर्यावरणाचा लेखाजोखा मांडल्यानंतर एकूणच मराठी समाजाच्या अंतःस्तराचा शोधपट मांडत त्याच्या बदलत्या सामाजिक धारणांसह आकारून दिसत नाही. बदलत्या नव्या समाजाच्या परिमाणात सांस्कृतिक पट हा समाजाच्या अंतःस्तरावरच्या जाणीवांनिशी उलगडणाऱ्या बृहत कादंबरीकाराच्या बहुप्रतीक्षित मराठी वाचक आहे. धन्यवाद. आपण मला बोलावलत आणि माझे विचार मांडण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी महाविद्यालयाचे आणि संयोजकाचे मनपूर्वक आभार मानतो आणि येथे थांबतो. धन्यवाद. Thank you, sir. Now I request to Mr. Sandeep Barge sir to introduce resource person. Good morning, everyone. I am greatly delighted to take an opportunity to introduce the resource person for today's session, Professor Dr. Karigatti, Tripti Karigatti ma'am. On behalf of the college, I cordially welcome ma'am. She is professor and head of the department of Shivaji University, Kolhapur, Maharashtra. Professor Dr. Tripti Karigatti ma'am has been teaching PG courses since 2000 in the Department of English, Shivaji University, Kolhapur, Maharashtra. She has also worked as a faculty in Mekelle University, Ethiopia for 2 years. She has completed 2 UGC research projects on one language contact and one on masculinity studies and one ICSSR research project on radio jockey speech. She has visited Taiwan, Ethiopia, Kenya, Paris and Germany for academic visit. She has published more than 50 research papers on second
language learning. ELT, ESP teachers talk, radio jockey speech, narrative theory, gender studies and cultural studies which have good citation index. Her Google citation index is 118, H index is 5 and I-10 index is 4. Her translation of a radio play entitled Photo Babu was awarded second prize at the national level and All India Radio in 2006. Professor Dipti Karigeti ma'am received the Outstanding Teacher Award for the year 2020-21 from the Rotary Club Gargis, Kolhapur. She has also translated, she has also co-translated into Marathi a research work by Russian ideologist I.M. Resiner on the village community structure of Western Maharashtra and its collapse. Maratha Gram Vyavasthecha Ras. She has been recently assigned a bilingual dictionary project by Oxford University Press. Ma'am, we would be delighted with your expertise and knowledge in every way. So, without consuming time, I would like to request Professor Dr. Tripti Karigeti ma'am to enlighten us with your words of true wisdom. Thank you. Thank you, sir. I request to Professor Dr. Tripti Karigeti, Madam, Head, Department of English, Shivaji University, Kolhapur, to share their valuable views. A very good morning to all of you. At the outset, I'd like to thank the organizers of this online international interdisciplinary conference on multiculturalism in contemporary literature. I thank the Arts, Commerce, Science College Palus, the management of the college, the principal, Dr. R.S. Sarunke, IQAC coordinator and my friend Dr. P.M. Patil, the coordinators of the conference, Dr. S.S. Lendway, Dr. S.R. Parlekar, and all the members of the organizing committee for inviting me here to share my thoughts. I also congratulate the organizers for selecting a very appropriate theme for deliberations when we are all going through unusual times of strife and divides. I like to talk on multiculturalism and multicultural literature today. As we have been listening from morning, multiculturalism is an important concept from contemporary political discourse. At the outset, let me clarify that I will be focusing more on multiculturalism than on the term multicultural, which is often used to refer to societies that are multi-ethnic. In my address, as this seminar focuses on multiculturalism, I will also like to look more closely at this term, which is about the way we respond in terms of policy to diversity and the challenges posed by such diversity in multicultural or multi-ethnic societies. In the late 1960s and early 1970s, Australia and Canada began to declare their support for multiculturalism. Until then, Australia had a white-only immigration policy and Asians and Jews were regarded as inassimilable. In 1971, this changed and there was an official recognition of the need to help in creation of a multicultural society. From here on, immigrants were encouraged to integrate rather than required to assimilate. Now, what does this mean? Efforts were made to help the immigrants to retain elements of their home culture. And ethnic community associations were not seen as detrimental to integration as it was considered earlier. On the other hand, ethnic community associations were seen as important vehicles of integration. So, it is obvious that from at the beginning, multiculturalism emphasized integration and not separation and segregation. Given the diverse conditions of immigrants in Western Europe, America, in addition, we need also to consider the indigenous people and substate national minorities. The issue of multiculturalism got quickly associated with racialization, assimilation, cultural pluralism, cultural diversity, as well as redressing the inequalities between the majorities and minorities,
in the context of especially the Western liberal democratic societies. We must remember here that multiculturalism is not only limited to claims of identity and culture. It also has some economic interests and political power. It includes demands for remedying economic and political disadvantages that people suffer as a result of their marginalized group identities. Discussion on multiculturalism revolves around culture and cultural groups that are to be recognized and accommodated. Yet we know how difficult it is to talk about the concept of culture. It is a contested, open-ended concept. And so, multiculturalists include a wide range of categories: religion, language, ethnicity, nationality, and race. Cultural diversity is based on religious, linguistic, ethnic, national, and racial differences. Now, states may prohibit racial discrimination, but they cannot completely remain neutral with respect to culture. For example, they need to designate one language or some languages as official languages for the matters of state purposes, as well as the medium of education. The work week and public holidays are also arranged around the calendar of some particular religion. That is, in fact, the state is organized around the language and culture, and this is especially of the dominant groups. Now, this has a normalizing effect, suggesting that one group's language and customs, as well as religion, are more valued than those of other groups. As a result, members of minority cultural groups face challenges that members of dominant groups do not. Now, various solutions have been advocated by different theorists. For example, Kolkata wants states to leave minority communities free of state interference. Will Kimlicka does not agree with this. He says this is not sufficient. What we need is recognition and positive accommodation of minority group practices, and advocates what he calls group differentiated rights. Now, this is against the idea of melting pot. In fact, proponents of multiculturalism reject the ideal of the melting pot, in which members of minority groups are expected to assimilate into the dominant culture. Instead, proponents of multiculturalism endorse an ideal in which members of minority groups can maintain their distinctive collective identities and practices. I would like to talk in short about some important political theorists whose work has actually helped shape this concept. As a political theory, this began in late 1980s because of the work especially of Canadian theorists. And this was, of course, because Canada was the first country to declare itself as a multicultural state. Canadian political theorist Will Kimlicka pioneered this theory through his book, Multicultural Citizenship. Kimlicka is a liberal exponent of multiculturalism. He thinks individual freedom is the highest good. For him, multicultural citizenship is about extending our politics to accommodate minority groups. But he says the reason we should do this is because individuals will lead a more fulfilling life in this way. They will be more themselves if we do this. So, unlike others, he actually says the highest good is not accommodating groups but allowing individuals maximum amount of freedom and opportunity to develop themselves. In his book, he does not give the same political status to especially three different communities from Canada: the indigenous people, the national or subnational groups, and the migrant groups. Of these three, the first two are considered as nations by him and are given the highest status, but the last group, the migrant group, gets the lowest status and the least number of opportunities for accommodation. The second important book to take note is Biko Parekh's Rethinking Multiculturalism. The subtitle of the book is Cultural Diversity and Political Theory. Unlike Will Kimlicka,
Bhikkhu Parekh wants to go beyond liberalism. He thinks for some people, membership of certain group can be very important. And so, both individual rights and group rights need to be respected. Now, this can create some kind of a tension between these two kinds of rights, the individual rights and the group rights. For example, some people within the community may feel that their rights are being denied. Parekh argues that we can often interpret individuals' freedom and individual rights from Western perspective, and this is what often happens. We are oblivious that we are looking at the things from a very Western kind of a perspective. Now, this denies other cultures certain opportunities to promote their own ways of living. In controversial kind of cases like female circumcision or wearing of headscarves, Bhikkhu Parekh advocates finding some sort of accommodation and understanding between the two parties. When we think of many other issues like polygamy, the age of consent, arranged marriages, or khap panchayats in Indian case, especially in the context of multiculturalism, we realize that these issues often involve women and their rights. And so, some feminists have been very critical of multiculturalism, and they say that it has an impact on women's rights. Yet, there are also some feminists who think multiculturalism and women's rights are not necessarily incompatible. Multiculturalism is a part of a broader political movement for a greater inclusion of marginalized groups. All kinds of marginalized groups, and not necessarily the migrants in European countries. So here we have African Americans, women, LGBTQ plus people, and also people with disabilities. Multiculturalism balances the rights of the individuals with the rights of the people to belong to cultures which may be minority cultures. From the global level to the national level to the very local regional level, we find that today societies are being torn apart by different kinds of stripes, discords, friction, conflicts. In such times, doesn't multiculturalism appear as a hope for a better kind of a society? Even if we may think so, in the Western world, the policies inspired by multiculturalism are being blamed for the discontent in those societies. Actually, European nation states have decided that the period of multiculturalism is already over. It is being seen largely as an incorrect response that was given to immigration by non-white people in an earlier period. This is the view of many European governments, many thinkers, and many of the common people too. At least in popular political discourse, multiculturalism is a worn-out idea. Multiculturalism is not seen as bringing about integration of different cultures. On the other hand, they feel that the very concept of integration, assimilation, these are problematic and need to be questioned. Multicultural policies have been blamed for augmenting the distance between different communities and even for breeding resentment between them. Now, actually, if we look around, even if we think about the concepts that multiculturalism has advocated, we feel that this shouldn't be the reason so. And much research, especially ethnographic kind of research, which has been done on these communities, has shown that increasing levels of inequality, economic collapse, the collapse of older industries, unemployment, growing class differentials, all these factors have contributed to the rise of these problems. But multiculturalism has been, multicultural policies have been blamed. They have received the blame for all these things. Discrimination in public and private sector also contributes to employment as well as to housing situation of the minorities. People from, especially the youth from minority communities, find it hard to get jobs. They find it hard to get houses in good localities.
Levels of unemployment and poverty have uh, increased drastically, especially in those areas where minority communities have been working for some 1 or 2 generations. Ethnic minorities have been more affected by the economic collapse than other communities. In case of minority families, the level of unemployment and poverty has risen faster and higher. Now, these reasons are also responsible for a general kind of dissatisfaction, and often multiculturalism has been on the receiving end, and the minority communities have been targeted. On the other hand, there are also people who have pointed out that on the part of minority communities, there is also lack of ability to tolerate criticism. There is a lack of open discussion on, especially on matters of faith in many ethnic minorities, and this has created some kind of a problem. There is also lack of internal debates and discussions within the minority communities on these important issues, and the minority communities need to address these things so that uh, people or different groups within the minority communities do not feel that their rights are being impeached upon. Overall, multiculturalism is being seen as a spent force. A policy and ideological shift has already taken place throughout Europe, and political discourse is already moving on to something else, interculturalism. To me, at least, interculturalism does not seem a move away from multiculturalism. In fact, it is a transformation which is going beyond multiculturalism. So, I'd like to tell you something about interculturalism and how it tries to differentiate itself from multiculturalism. Interculturalism advocates positive encounters between different ethnic and faith groups. It believes in setting up dialogue and joint activities between different groups. It sees itself as different from multiculturalism, which, according to interculturalism, was only a celebration of diversity and different cultures, especially the classic multiculturalism. Perhaps multiculturalism thought of ethnic and national cultures as having rigid boundaries, and in this, interculturalism sees a kind of essentialist tendency. And so, interculturalism wants to go beyond this idea that cultures have rigid boundaries. Interculturalism focuses on connectedness, on interaction, and interweaving between different beliefs, practices, lifestyles of different ethnic groups. In fact, interculturalism is trying to show that these groups are not as separate as we think. These groups are different, but they are not essentially separate. Different groups share concepts of tolerance, liberty, and rationality, whereas European countries think that these concepts originated from them are limited to them. Different cultures across the world are also in a kind of a flux at all times. Cultures are not static entities. Moreover, in current times, with growing transnationalism, with growing cosmopolitanism, we are going through a new phase, and this phase gives more opportunities for dialogue across various borders. We need to take these opportunities. It is imperative that we increase dialogue with each other. So, this dialogic interculturalism is being stressed. We are more interconnected than we actually think we are. We have more hybrid identities than we are ready to admit. Many research projects have also shown that better multi-ethnic relationships can be cultivated through a bottom-up approach. So instead of national policies deciding something and seeing that it is implemented from top down, bottom-up approach is being advocated, where negotiations between neighbors resulting in more long-lasting kind of friendships are developing. A theorist, Hibbert, has called this cosmopolitanism at local level. This intercultural dialogue can further be aided by multicultural literature, perhaps. Now, what is actually multicultural literature? Literature
which is about socio-cultural experiences of underrepresented groups, is multicultural literature. This literature includes those who fall outside the mainstream mainstream categories such as race, ethnicity, religion, gender, sexual orientation, disability, language. This literature is written by those who are members of these underrepresented groups and those who fall within the category of mainstream. Multicultural fiction books are fascinating. They are like looking glasses into different kinds of cultures and perspectives. They give us different viewpoints to understand the world. And it is not just the understanding of the world, but it is also looking at ourselves through a different kind of a lens. There is beauty in this diversity, and these books bridge the boundaries and shatter the stereotypes. They bring different cultures together, and they become like bridges into different kinds of life experiences. They reveal that human beings are similar everywhere. We experience the same kinds of feelings, we feel the same kind of pains. When the external differences are removed, we are essentially the same inside. Reading fiction is a very unique kind of an experience. For some time, we become someone else, someone belonging to some other gender, some other age, some other nationality, and completely different kinds of life experiences. We experience something else, and when we are back, that experience leaves a permanent mark on us. We are changed. We know more. We know someone else's life. We know their challenges. We know their experiences. We understand that particular culture and that life more, and that shapes our worldview. So, I feel if we make it a point to read more of multicultural literature, if we make it a point to keep more of this multicultural literature on our syllabi, and as well as encourage more research on multicultural literature, this is going to help us a lot. This is going to help us as individuals. This is going to help the society at large, because we are shaping the next generation. And from that perspective, I feel that it is not sufficient to bring in more multicultural literature only in the syllabi of undergraduate classes and the postgraduate classes and the research students, but it is also essential to see that our children from the school stages are reading more of multicultural literature. Let them know more about Adivasi lives. Let them know about different kinds of minority communities around us. Let them know about the migrants in India. Let us know more about our neighbors. And this is going to foster better kind of relationships with each other. Thank you. Thank you, madam, to share your valuable views and valuable information about the multiculturalism and guidance for research scholar. Now I request to Dr. Anandi Shinde madam to introduce today's resource person. Thank you, madam. Now I request to Dr. Yogesh Patil sir share their views on समकालीन हिंदी साहित्य में बहुसंस्कृतिता। नमस्कार। पलूस शिक्षण प्रसारक मंडल के कला, वाणिज्य तथा विज्ञान महाविद्यालय और IQAC के संयुक्त तत्वावधान में समकालीन हिंदी साहित्य में बहुसांस्कृतिकता इस विषय पर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थित सभी मान्यवरों का हार्दिक स्वागत। इस संगोष्ठी के प्रमुख अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर योगेश पाटिल सर आज हमारे बीच आभासी के रूप में उपस्थित हैं। आयोजकों ने आदरणीय प्रमुख अतिथि डॉक्टर योगेश पाटिल सर जी का परिचय देने की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है, इसलिए मैं उनका संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। डॉक्टर योगेश गोकुल पाटिल स्नातकोत्तर हिंदी विभाग अध्यक्ष एवं उपप्रधानाचार्य, विद्यावर्धिनी सभा का कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय धुले में सर कार्यरत हैं।
इनकी शैक्षिक योग्यता है MA सेट PhD। आपके PhD का शोध विषय रहा है अमरकांत का कथा साहित्य, कथ्य एवं शिल्प। आपको अध्यापन का करीब 21 साल का अनुभव है। साथ ही आप प्रोफेसर एवं उपप्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हैं। आपकी विधा विशेष है कहानी तथा उपन्यास साहित्य। आप शोध निर्देशक के रूप में भी कार्यरत हैं और करीब 8 साल से आप शोध निर्देशक के रूप में काम कर रहे हैं और आपके मार्गदर्शन में करीब PhD के 4 छात्र कार्यरत हैं। आपके प्रकाशित शोध आलेखों की संख्या 41 है। इसके साथ ही आपने 6 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आर्थिक सहयोग से आपने लघु शोध प्रकल्प पूर्ण किया है। इसके साथ साथ हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद औरंगाबाद विभाग स्थायी समिति के आप सदस्य रहे हैं। साथ ही उत्तर महाराष्ट्र हिंदी प्राध्यापक परिषद के उपाध्यक्ष पद पर आप कार्यरत हैं। आपको प्राप्त पुरस्कार इस प्रकार है कि पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी सम्मान शिलांग मेघालय द्वारा आपको 2018 में सम्मानित किया गया। इसके अलावा विद्यारत्न पुरस्कार 2012 का आपको प्राप्त है। इसके साथ ही आप आकाशवाणी धुले तथा जलगांव के साहित्यिक वार्ता प्रसारित करते हैं। इसके साथ साथ नागरी लिपि परिषद नई दिल्ली, महाराष्ट्र राष्ट्र सभा पुणे और महाराष्ट्र हिंदी परिषद के आप आजीवन सदस्य रहे हैं। आपके संयोजन में विश्व भाषाओं से हिंदी में अनुदित साहित्य पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आपने आयोजन किया है। इसके अलावा विश्वविद्यालय स्तर पर अनुसंधान प्रकल्प प्रस्तुतिकरण 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रम कार्यशाला का भी आपने आयोजन किया है। तो इतनी बड़ी हस्ती हमारे बीच आज उपस्थित हैं और हम उनके विचारों से निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। यही कामना करते हुए मैं आदरणीय प्रमुख अतिथि डॉक्टर योगेश पाटिल सर जी को आभासी मंच पर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। पलूस शिक्षण प्रसारक मंडल कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय द्वारा समकालीन साहित्य में बहुसंस्कृतिवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी विद्वज देवियों तथा सज्जनों, इस विशाल आयोजन हेतु महाविद्यालय के प्रधानाचार्य माननीय डॉक्टर R.S. सालुंके जी, अंतर्गत गुणवत्ता सुधार समिति IQAC के समन्वयक डॉक्टर P.M. पाटिल जी, इस विशाल आयोजन के लिए अथक परिश्रम करने वाले संयोजन समिति के सभी सदस्य एवं हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर शकुंतला बाग, आप सभी का मैं मनपूर्वक अभिनंदन करता हूं। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह मुख्य विषय है समकालीन साहित्य। समकालीन लेखन वह होता है जो हमारे समय के सवाल है उन सवालों से सीधे टकराता है। समकालीन रचनाकार हिंदी साहित्य को जब हम पढ़ते हैं तो समकालीन साहित्य का प्रारंभ कब माना जाए, इसे लेकर अलग अलग विद्वान और अलग अलग रचनाकार इसकी समय सीमा को लेकर अलग अलग राय रखते हैं। लेकिन इसे मैं अपने मतानुसार 3 हिस्सों में विभाजित करता हूं। सबसे पहले तो 1947 से लेकर 70 तक यह समकालीन साहित्य का पहला दौर माना जा सकता है। 70 के बाद 1970 से लेकर 90 तक यह उसका दूसरा पड़ाव है और 1990 से लेकर अब तक यह तीनों ही अलग अलग नहीं हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण विश्व के स्तर पर की घटनाएं भी है,
भारत के स्तर पर भी घटनाएं हैं और बहुत सारे जो साहित्य को प्रभावित करने वाली घटनाएं भी हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद की बदली हुई स्थिति, आज़ादी के बाद की बदली हुई स्थिति, आज़ादी के बाद के विभाजन की बदली हुई स्थिति और साथ ही साथ आपातकाल की स्थिति, इन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रभाव हिंदी साहित्य पर पड़ना स्वाभाविक था। समकालीन साहित्य की जब हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से स्वतंत्रता के बाद जो साहित्य लिखा गया, आज़ादी के पहले सभी भारतीयों ने आज़ाद भारत के सपने देखे थे। उन सपनों में उन्होंने देखा था कि आज़ाद भारत में, स्वतंत्र भारत में वह सारी खुशियां होगी, उनके सारे सपने पूर्ण होंगे, लेकिन सारे सपने कांच के टुकड़ों की तरह टूटकर बिखर गए और फिर उससे निर्माण हुई परिस्थितियां, उससे निर्माण हुई स्थिति का चित्रण हमें समकालीन साहित्य में मोहभंग के रूप में दिखाई देता है। आज़ादी के बाद बहुत सारे अलग अलग विमर्श हमारे सम्मुख नजर आते हैं, तो जिनमें से आज हम मुख्य रूप से दलित विमर्श, किसान विमर्श, नारी विमर्श और महानगरीय जीवन की यांत्रिकता जो भौतिक महानगरों में चकाचौंध हमें दिखाई देती है, बाहर से भौतिक सुविधाएं दिखाई देती है, लेकिन अकेलापन, घुटन और उनकी त्रासदी का चित्रण भी कहानीकारों ने किस प्रकार किया है, इसका चित्रण हम उन कहानियों के साथ ही आज करने जा रहे हैं। सबसे पहले समकालीन साहित्य की अवधारणा क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। समकालीन साहित्य की जब भी चर्चा होती है तब यह मान लिया जाता है, यह माना जाता है कि जो तत्कालीन है वही समकालीन है। जब भी हम समकालीनता पर बात करते हैं तो हम इसे शब्द माने या विचार माने, लेकिन समकालीन का अर्थ इतना सीमित नहीं है, वह अत्यंत व्यापक है। समकालीन लेखन वह लेखन होता है जो हमारे समय के जो मुख्य प्रश्न हैं, हमारे समय के जो मुख्य आंदोलन हैं, हमारे समय की जो मुख्य समस्या है, उनसे सीधा हमें जब जोड़ता है तो वह समकालीन साहित्य कहा जाता है। समकालीन लेखन में जब हम दलित विमर्श या दलित साहित्य की बात करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि जो उनका जीवन संघर्ष है, भोगी हुई यातना है, तो दलित साहित्य हमें सभी विधाओं में अत्यंत सशक्त रूप से उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दर्ज की है। कविता, कहानी, उपन्यास और सर्वाधिक चर्चित जो रही वह विधा आत्मकथा। आत्मकथाओं के माध्यम से उन्होंने, चाहे ओम प्रकाश वाल्मीकि हो, चाहे मोहनदास नेमिशराय हो, चाहे सुशीला टागोर, जो भी दलित साहित्यकार थे, उन्होंने एक तरफ भोगा हुआ यथार्थ और दूसरी तरफ सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति अपने साहित्य के माध्यम से, आत्मकथाओं के माध्यम से की है। आज हम दलित साहित्य के जो समकालीन कहानी लेखन है, जो कहानी संग्रह काफी चर्चित रहा, ओम प्रकाश वाल्मीकि का सलाम कहानी संग्रह, और उस दलित विमर्श की जो प्रमुख प्रवृत्तियां है उसे जानना और उस पर चिंतन करना आज के युग में अत्यंत प्रासंगिक है। वर्तमान दलित कहानी समकालीन दलित जीवन के कटु सच का साक्षात्कार है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के साथ बंधुता की दुहाई देते हुए आज 7 दशक पूरे होते जा रहे हैं, परंतु दुख की बात यह है कि हमने समता का संकल्प किया और क्या समता स्थापित हुई? आज चारों तरफ विषमता ही विषमता दिखाई दे रही है।
दलित साहित्य की मूल प्रेरणा महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके विचार है। उन्होंने दलितों को शिक्षा, संगठन और संघर्ष का सूत्र दिया। उनका प्रभाव सभी दलित साहित्यकारों की मूल प्रेरणा है। दलित साहित्यकारों में मुख्य रूप से मोहनदास नेमिशराय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, अजय नावरिया, सुशीला टागभोरे, जयप्रकाश करदम, डॉक्टर दयानंद बटोही तथा रत्न कुमार सांभरिया जैसे कई रचनाकार हैं जिन्होंने अत्यंत प्रभावी रूप से साहित्य का निर्माण किया। दलित वर्ग समाज का वह वर्ग है जिसने सदियों से शोषण को सहा है। आज के आधुनिक युग में जात पात का जहर समाज व्यवस्था के रगों में दौड़ रहा है। आज भले ही हमने 21वीं सदी के 2 दशक पार कर लिए, लेकिन बावजूद इसके वास्तव हमारे सम्मुख है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के सलाम कहानी संग्रह में दलित जीवन का आक्रोश, उनका जीवन संघर्ष, उनके जीवन के अभाव, उनकी अव्यक्त पीड़ा तथा छटपटाहट से पाठक साक्षात्कार करता है। दलित समाज की सेवा करने के बावजूद बदले में उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दलितों को यह एहसास दिलाया कि वे भी मनुष्य हैं। उन्होंने अपने भाषण, लेखन और कार्य से दलित समाज में नई चेतना का संचार किया। हिंदी दलित कहानी के रूप में जब हम ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह सलाम प्रकाशित हुआ, जो काफी चर्चित रहा, तो इस सलाम कहानी संग्रह की कुछ जो प्रमुख रचनाएं हैं उन पर संक्षेप में यहाँ पर हम बात करेंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि का प्रसिद्ध कहानी संग्रह सलाम में पीड़ित दलित आत्माओं का आक्रोश है, वेदना है, व्यथा है। सलाम कहानी संग्रह की तमाम कहानियों में जीवन का कटु यथार्थ कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त हुआ है। इस संग्रह की सभी कहानियां, जिसमें वर्णभेद, वर्गभेद, जाति व्यवस्था तथा सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ लेखक के आक्रोश को तो वह व्यक्त करती ही है, साथ ही साथ दलितों की अस्मिता के प्रति समाज की संवेदना को उद्घाटित करती है। सलाम कहानी के माध्यम से लेखक ने दलितों के साथ जो अन्याय, अत्याचार और शोषण होता है उसका चित्रण किया है। सलाम कहानी संग्रह में कमल वह खुद ब्राह्मण है जो अपने दलित मित्र हरीश के साथ गांव आता है। सुबह सुबह चाय पीने के लिए वह दुकान पर आते हैं। पहले तो वह दुकानदार उसे चाय देने की हामी भरता है, परंतु जैसे ही दुकानदार को यह पता चलता है कि यह व्यक्ति किसी दलित की शादी में आया है, तो उसका रवैया बदल जाता है। वह चाय देने से इनकार कर देता है। इस प्रसंग के माध्यम से दलित कहानीकार बार बार वर्तमान समाज के कटु सत्य को दोहराते हुए हमें नजर आते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने सलाम कहानी के दलित युवक हरीश के माध्यम से दलितों के अपमानित करने के लिए समाज द्वारा निर्मित जो सलाम प्रथा को हमेशा के लिए सलाम करने का अर्थात खत्म करने का ऐलान किया हुआ है। वर्तमान युग में श्री विमर्श पर काफी चर्चा हो रही है। कौन नहीं जानता कि आज भी नारियों का जीवन अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है। यौन शोषण तो नारी जीवन के लिए अभिशाप है। ऊपर से अगर वह दलित नारी हो तो उसके लिए तो दोहरा अभिशाप। अब देखो, इस कहानी संग्रह की जो प्रमुख कहानियां हैं, जिनमें ग्रहण, बिरम की बहू, जिनावर, इन कहानियों में दलित नारी की विवशता, पीड़ा की अभिव्यक्ति सशक्त रूप से
हुई दिखाई देती है। दलित विमर्श की जब बात करते हैं तो एक कविता जो काफी प्रभावित जिसने मुझे किया, केवल एक पद उसका मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। बच्चालाल उन्मेष इनकी यह कविता है और जिस कविता का शीर्षक है छिछले प्रश्न गहरे उत्तर। कविता अत्यंत सहज सरल बोलचाल की भाषा में होते हुए भी अपना प्रभाव निश्चित रूप से छोड़ती है। कविता की पंक्तियां इस तरह, कौन जात हो भाई, दलित है साहब, नहीं मतलब किस में आते हो, आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं, और अलग की हुई थाली में आते हैं साहब, मुझे लगा हिंदू में आते हो, आता हूं न साहब पर आपके चुनाव में। कवि आगे कहता है, क्या खाते हो भाई, जो एक दलित खाता है साहब, नहीं मतलब क्या क्या खाते हो, आपसे मार खाता हूं, कर्ज का भार खाता हूं, और तंगी में नून तो कभी अचार खाता हूं, नहीं मुझे लगा मुर्गा खाते हो, खाता हूं न साहब पर आपके चुनाव में। यह केवल शब्दों का खेल नहीं है, उपेक्षा का अनुभव है। कभी आगे और भी कहता है कि क्या पीते हो, जो एक दलित पीता है, नहीं मतलब क्या क्या पीते हो, छुआछूत का गम, टूटे अरमानों का दम, मुझे लगा शराब पीते हो। वह कहता है पीता हूं न साहब पर आपके चुनाव में। यहाँ पर यह कविता जो है अत्यंत यथार्थ जीवन की सच्चाई हमारे सम्मुख रखती है। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हम जो समकालीन लेखन में किसान, जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, उसके जीवन के संघर्ष को बड़ी बारीकी से हिंदी कविता में उदय प्रकाश, अरुण कमल, मंगेश डबराल जैसे कई कवियों ने अभिव्यक्त करने का प्रामाणिक प्रयास किया है। आज हम 21वीं सदी में तकनीकी से चले हुए ही दुनिया में जी रहे हैं। हम सुबह से लेकर रात के सोने तक तकनीकी का उपयोग तो करते हैं, परंतु हमें जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वह होती है अनाज। और इस अनाज को जो बोता है, जिसके कारण हमें रोटी मिलती है, उस किसान की समस्या को लेकर न तो राजनेता सोचते हैं, न तो व्यापारी सोचता है। उसके जीवन का संघर्ष क्या है, इसे प्रस्तुत कविता में चित्रित किया है। किसान विमर्श को लेकर जब हम बात करते हैं, किसान के जीवन के संघर्ष की जब हम बात करते हैं, तो वास्तव में किसान का जीवन अंधकार से भरी गलियों की तरह दिखाई दे रहा है। किसान के हित में सोचने वालों की तादाद सही मायने में दिन प्रतिदिन कम होती दिखाई दे रही है। जय जवान और जय किसान का नारा पता नहीं समय के साथ ही लुप्त हो गया। पूंजीपति और साहूकार लोग आज भी किसान का शोषण कर रहे हैं। बेचारा शोषित पीड़ित किसान अपनी दुर्दशा को संवारने में नाकाम हो रहा है। स्वतंत्रता के बाद वादे तो बड़े बड़े हुए, लेकिन प्रत्यक्ष यथार्थ की स्थिति में किसान का जीवन जो आजादी के पहले था, उसमें कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं देता। दुष्यंत कुमार 1975 में अपने प्रसिद्ध गजल साए में धूप के माध्यम से जो बात कहते हैं कि आजादी के पहले सभी भारतवासियों ने जो सपने देखे थे, तो किसान का सपना देखना भी बिल्कुल, उन्होंने भी सपने देखे थे किसान ने, लेकिन वह सपने उनके पूर्ण नहीं हुए। उस अधूरे सपने को लेकर दुष्यंत कुमार कहते हैं कि कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए,
कहा चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। जो चीज हर घर और हर गांव में होनी चाहिए थी, आज़ादी के 70 साल के बाद भी किसी भी किसान के पास, किसी भी मजदूर या किसी भी व्यक्ति के पास वह नहीं पहुंची। यह सबसे बड़ी चिंतन वाली बात है। स्वतंत्रता के पश्चात 70 साल के बाद भी स्थिति में परिवर्तन हमें बहुत अधिक दिखाई नहीं देता। संसद और विधान भवन में राजनेता किसानों के बारे में सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, योजना बनाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से किसान तक उन योजनाओं का कोई लाभ नहीं पहुंचता, परंतु उनके हक के लिए कोई लड़ता हुआ भी नजर हमें दिखाई नहीं देता। हिंदी कविता में जो कवि है जिन्होंने किसान के जीवन की त्रासदी को कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है, उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किसान के जीवन की त्रासदी को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि कभी मैं किसानों की चिल्मों में अंगारों की तरह दमकने की कामना करता था। मजदूरों की बीड़ियों में सुलगने के ख्वाब देखा करता था और इस तरह अपने को बचाकर उनका और उनके लिए होना चाहता था। 1990 के बाद उदारीकरण की नीति आने के कारण किसानों की परेशानियां और अधिक मात्रा में बढ़ी। वैश्वीकरण की नीतियों के चलते समाज में असमानता की खाई बढ़ती गई, जिसकी सबसे अधिक मार मजदूर, किसान और निम्न वर्ग को हुई। किसान पर कर्ज की अधिकता के कारण वह टूटता जा रहा है। फिर भी किसान विकट परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध है। केदारनाथ अग्रवाल जी किसान की त्रासदी को व्यक्त करते हुए कहते हैं, हमारे हाथ में हल है, हमारे हाथ में हल है, हमारे हाथ में बल है कि हम बंजर को तोड़ेंगे। शब्द महत्वपूर्ण है। किसान की आशा और आस्था का चित्रण इसमें है। वह कहता है कि हम बंजर को तोड़ेंगे, बिना तोड़े न छोड़ेंगे। यहाँ पर कवि का संकेत जो है कितना आशावादी है। वह उसका हौसला अभी भी बुलंद है कि बंजर धरती को भी तोड़कर उसमें हल चलाकर उसे फिर से उपजाऊ बनाएंगे। किसान का यह आशावाद ही तो है जो उसे जीने की प्रेरणा देता है। आज हम देखते हैं कि इतनी सुविधाओं के बावजूद भी किसान की जीवन यापन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और महाराष्ट्र में जब हम देखते हैं तो कई किसानों की आत्महत्या के ही भी प्रश्न हमारे सम्मुख आते हैं। किसानों की इसी प्रश्नों को लेकर अवनीश मिश्रा मैं किसान हूं कविता में कहते हैं, मैं किसान हूं, बंजर सी धरती से सोना उगाने का मादा रखता हूं। मैं किसान हूं, बंजर सी धरती से सोना उगाने का मादा रखता हूं, पर अपने हक की लड़ाई लड़ने से डरता हूं। पर अपने हक की लड़ाई लड़ने से डरता हूं। ये सूखा, ये रेगिस्तान, सूखी हुई फसल को देखता हूं, न दिखता कोई रास्ता, तभी आत्महत्या करता हूं। यहाँ पर हम जान सकते हैं कि वास्तव में इस धरती का मालिक किसान किन परिस्थितियों से जूझ रहा है। इतना ही नहीं, उसके आत्महत्या की वजह क्या है यह भी हमें समझ में आता है। अरुण कमल जो समकालीन कविता के अत्यंत प्रसिद्ध कवि है, उन्होंने किसान की त्रासदी के संदर्भ में भी अपनी बात रखी है। वे कहते हैं कि अपने देश में बाढ़ एवं प्रलय के कारण हो रहे सर्वनाश की यह बात अपनी कविता के माध्यम से रखते हैं
अरुण कमल की कविता किसान के जीवन और यथार्थ के आसपास भटकती हुई हमें दिखाई देती है। अनाज के बिंब को उनकी प्रसिद्ध कविता धार में वे कहते हैं, यह अनाज जो बदल रक्त में टहल रहा है तन में कोने कोने, यह कमीज जो ढाल बनी है बारिश सर्दी लू में, सब उधार का मांगा चाहा, नमक तेल हिंग हल्दी सब कर्ज का, यह शरीर भी उनका बंधक। कवि कहते हैं, अपनी अनुभूति को व्यक्त करते हुए वे बड़े सशक्त शब्दों में आगे कहते हैं कि अपना क्या है इस जीवन में, अपना क्या है इस जीवन में, सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार। किसान की हालत का चित्रण हमें यहाँ स्पष्ट दिखाई देता है। जो किसान अन्नदाता कहलाता है वही भूखा रोता चिल्लाता है, उसके कपड़े खाने पीने की चीजें कर्ज के तले दबी हुई है। इतना ही नहीं, उसका शरीर भी किसी न किसी का बंधक होने पर विवश है। समकालीन साहित्य में जब हम स्त्री विमर्श की बात करते हैं तो स्त्री विमर्श एक ऐसा विमर्श है जो स्त्रियों को उसकी परंपरागत भूमिका से हटकर उसके स्वतंत्र अस्तित्व की पहचान कराता है। अन्याय अत्याचार शोषण के विरुद्ध संघर्ष की ताकत देता है। स्त्री सामर्थ्य की खोज एवं पहचान कराता है। स्त्री की मानसिकता में परिवर्तन कराता है तथा उसे एक नई दिशा प्रदान करता है। साहित्य में स्त्री विमर्श एक मानवीय दृष्टि है जो स्त्री पुरुष के भेद को मिटाकर दोनों में प्रतिष्ठा की समानता लाने की बात करता है। डॉक्टर प्रभा खेतान जो हिंदी की एक प्रमुख महिला कथाकार है, वे कहते हैं, उनके मतानुसार स्त्री न गुलाम रहना चाहती है न ही पुरुष को गुलाम बनाना चाहती है। प्रभा खेतान जी लिखती है, स्त्री न गुलाम रहना चाहती है न पुरुष को गुलाम बनाना चाहती है। स्त्री चाहती है मानवीय अधिकार, मनुष्य के रूप में जीने का अधिकार एक नारी चाहती है। 1970 का वर्ष हम देखते हैं कि केवल भारत नहीं तो पूरे विश्व में महिला सबलीकरण और महिला सशक्तिकरण का वर्ष माना गया। उसके बाद अनेक महिला लेखिकाओं ने महिला लेखन में हमें पहला दौर, जिसके मुख्य रूप से महादेवी वर्मा श्रृंखला की कड़िया की रचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1960 या 70 के दशक में जिन महिला लेखिकाओं ने अत्यंत नारी अस्मिता की बात कही, नारी अधिकार की बात कही, उसमें उषा प्रियमदा जी हैं, कृष्णा सोक्ति, मन्नू भंडारी जी और शिवानी। इसके अलावा और भी प्रमुख महिला कथाकार हैं जिन्होंने नारी अस्तित्व, नारी की अस्मिता पर अपनी बात कही है। नारी मन के अंतर द्वंद्व को, नारी जीवन के संघर्ष को, उसकी अपनी स्वतंत्रता को, बदली हुई परिस्थितियों को जिन महिला लेखिकाओं ने अपने कहानी, उपन्यास और आत्मकथाओं के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया, उनमें जो प्रमुख महिला रचनाकार है 8वें दशक के बाद, विशेषतः हम जिनकी बात करते हैं, जिनमें ममता कालिया है, चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग, मंजुल भगत, मैत्रेय पुष्पा, मृणाल पांडे, प्रभा खेतान, सुधा अरोड़ा, रमणिका गुप्ता और अनामिका। ऐसे इसके अलावा और भी बहुत से रचनाकार हैं जिन्होंने नारी विमर्श को लेकर अनेक रचनाएं रखी, नारी स्वतंत्रता को लेकर अपनी बात कही और एक मुख्य विषय को लेकर मैं अपनी बात को समापन की ओर हम जा रहे हैं। जो अनेक रचनाकार और आलोचकों से कई बार उन विषयों को छोड़ दिया जाता है, वह भी साहित्य का ही एक हिस्सा है। वह है प्रवासी साहित्यकार जो इस देश को छोड़कर देश के, विश्व के किसी कोने में भले ही जाकर बसे हैं,
लेकिन उनका जुड़ाव इस संस्कृति से है, इस भाषा से है। इसलिए वो भले ही जापान में हो, लंदन में हो, मॉरिशस में हो, जहाँ पर भी है, हिंदी भाषा के प्रति अपनी जो समर्पण का भाव है, इसके कारण वह साहित्य सृजन कर रहे हैं। ऐसे समकालीन प्रवासी साहित्यकार जो है, इनमें अभिमन्यु अनंत है, सुधा ओम ढिंगरा, जिनकी बड़ी प्रसिद्ध कहानी है कौन सी जमीन अपनी। जब वो भारत आते हैं तो लोग उन्हें विदेशी कहते हैं, और जब विदेश में रहते हैं तो लोग उन्हें भारतीय कहते हैं। तो उनका प्रश्न है कि अपनी खुद की जमीन कौन सी है, यह प्रश्न। उसके साथ ही साथ तेजेंद्र शर्मा, सुषम बेदी, उषा राजेश सक्सेना, समकालीन साहित्य को समृद्ध करने वाले इन सभी रचनाकारों ने मनुष्य जीवन के, निम्न मध्य वर्गीय जीवन के अनेक प्रश्नों को हमारे सम्मुख रखा है, जो हमारे चिंतन को, सोच को गरिमा प्रदान करते हैं। आप सभी विद्वज्जनों ने इस आभासी मंच के द्वारा आपने सुना। आप सभी के प्रति आभार प्रकट करते हुए इस महाविद्यालय के प्राचार्य और संयोजन समिति, जिन्होंने यह सुअवसर मुझे प्रदान किया, सबके प्रति आभार, और मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir. Hello friends, my name is Dr. Nitin Koekar and I'm going to present the paper Opposite Sex Alter in Matt Ruff's Set This House in Order, a psychosociological study. Friends, I have made 4 sections in the same paper, in which the first section, just the introduction about the multiple personality disorder and opposite sex alters have been given. Okay, so the novel Set This House, which is written by the Matt Ruff, is about the psychological and social devastation of the American family. Now here, I have chosen the theme that is multiple personality disorder and the opposite sex alters, that how the personality, how the character or the lead character in the novel, that is Andy, he develops several alternate personalities in himself. And there is another character called Penny. So both are the central characters. The Penny also develops certain other alternate characters. So Penny develops around 26 to 27 characters in herself, whereas Andy develops more than 35 characters or alternate personalities in himself. So friends, as they have developed various other alternate characters, so certain alternate sexual characters or sexual alternate, what we say, opposite sex alters they have created. So I have chosen the same and I have applied certain theories, like the theory which is developed by A. Miller regarding the sexual abuse, sexual assault and its implications in the psychological alteration or multiple personality disorder. So that I have tried to apply for this. Along with that, sexual assault, sexual sadism or sexual abuse, how it will be or how it is connected and connected rootly, deeply to the psychological disorders that have been developed. And at the end, what kind of implications of industrialization or industrial developments are there in the American society, and due to which what kind of psychological tensions have been developed and social devastations are there. So the same has been applied in this paper. So for that, the novel is nothing but the representation of social and psychological devastation, degradation of an American family due to this industrialization and other psychological and sociological tensions. Okay, so let me just review what I have done. Okay, so the present paper explores the depiction of opposite sex alters in the characters of novels, along with the representation of cultural degradation in American society. So friends, without spending much time, let me come to the point, because multiple personality disorder is nothing but it is the result of the various and continuous traumas, stressful traumatic conditions, okay, in the past life. So when a stressful or traumatic experience triggers the re-emergence of these dissociated parts, the person usually switches within seconds into an alternate personality. So that is the reason to create alternate personality. Okay,
Now, the people with dissociative identity disorder, which is also known as multiple personality disorder, may have distinct rational identities within themselves that can be that are able to assume the control of their behavior and thought. So, identities may these alters may be or may not be aware of this altered personality, and may be or may not be present with the different names, mannerism, genders, identities, and sense of age. That is, male alter into female body or female alter into male body. So why it can be happen? So I have applied to the same. That is, A. Miller in his famous book, in his theory regarding the opposite sex alter, that he explains that theory. So what he explains, that I have taken the reference of the same, that he explains that just a minute, friends. So he explains in his book, that is Becoming Yourself, Overcoming Mind Control and Ritual Abuse, that he explains the nature and function of opposite sex alter, and in which he has also depicted the reasons, that what are the reasons of the same. So in which he tried to say that according to him, sexual abuse is the basic reason that the girl feels insecure, hence she unconsciously tries to adopt the identity of male. Male will not be raped or will not be abused sexually or sadistically like females. Hence, she develops male personality which will be strong or brave in the nature. So, to cope up with these stressful memories that alternate and especially opposite sex alter or personality have been developed. Okay, so it is happened in the character of Andy, who shows himself as a he is boy, he is male, but we come to know at the end of the novel that he is not male, but he is the male personality resides in the female body. Okay, now again I also incorporated the reasons of this, that is sexual assault, sexual sadism. But at the end of this paper, I have commented on the American society, that what are the reasons to develop such psychological tensions or disorders in American society. So industrial development and modernization in the American culture, or hybridization of the American culture, is one of the basic reasons behind this. Okay, so let me point out that, and then we will become to know. So, primarily as a colony, American society contains very less consciousness about the heritage of long culture and philosophy. Such rootlessness helped and accelerate the speed of demolition of family institutes, marriage institutes, and social values ethics. So, various movements like feminism changes the personal, social, and political life of women. But at the end, or on other hand, it also affected the society and human relationships negatively. The demolition of family institutes resulted into the creation of problems in the married life of the people. Nurturing to their infants get affected. So events of physical abuse and neglect of child or children took place in American society at a wide range. So various children become the victim of child abuse and become mentally weak and disturbed. The lack of deep association with culture, values, and behavioral liberty enhanced the events of violence, aggression, and criminal activities in American society. Along with such problems, fractured psychology became the primary or principal obscurity for society, and psychological tensions were developed at large scale in American society. So the same psychological tensions and disorders among the people have been depicted more genuinely by the American novelists like Matt Ruff in American literature. So I hope, friends, you have understood the theme and you have understood the point of view presented in the paper. So I thank to all the organizations to providing me the chance and to present my paper. Thank you. Thank you. आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज पलूस के इस एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेब संगोष्ठी में मैं प्राध्यापक डॉक्टर मीनाक्षी विनायक कुरने आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रपत्र का विषय है चंद्रकांता के उपन्यास में चित्रित समस्याएं। चंद्रकांता 60वीं पीढ़ी की प्रतिष्ठित साहित्यकार रही है। चंद्रकांता ने विविध विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। उपन्यास, कहानी, नाटक, आत्मकथात्मक संस्मरण
यात्रा, साहित्य, कविता आदि विविध विधाओं में उन्होंने अपनी कलम चलाई है या अपनी प्रतिभा की वह परिचय दे चुकी है। चंद्रकांता ने 7 उपन्यास लिखे। चंद्रकांता का अंतिम साक्ष्य उपन्यास आप सभी में चर्चित रहा है, यह आप सभी को मालूम है। इस उपन्यास में लेखिका ने रिश्ते और प्रेम संबंधों को बड़ी मार्मिकता से उकेरा है। यह उपन्यास जम्मू की ढक्कियों और एक डुग्गर परिवार की ठाकुरी आन बान के साथ भिन्न परिवेश की सच्चाइयों से परिचित करता है। इसमें जो समस्याएं चित्रित है वह उसका जिक्र मैं यहाँ पर करना महत्वपूर्ण समझती हूँ। अर्थाभाव की समस्या को लेखिका ने बहुत ही मार्मिकता से उद्घाटित किया है। अपना जीवन सुखमय करने की कोशिश हर सजीव प्राणी करता है। मनुष्य प्राणी तो बुद्धिजीवी प्राणी है। वह अपना जीवन यापन करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए निरंतर प्रयास करने वाला व्यक्ति अपनी योग्यतानुरूप काम तथा वेतन नहीं मिलता तो वह अपना संतुलन खो बैठता है। अर्थाभाव से पीड़ित कई दाम्पत्य परिवेश की चिंता से चिंतित होकर इच्छित उद्देश्य प्राप्त नहीं होने के कारण अपने संतान को भी जन्म नहीं देते। वर्तमान जीवन में महंगाई ने तो अपनी सीमाएं तोड़ दी है। दिन रात परिश्रम करने के बावजूद भी उनके नसीब 2 वक्त की रोटी जुटाना बहुत मुश्किल होता है। जीवनावश्यक जरूरतें पूरी करने में, अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में मानव सदियों से प्रयास करता रहा है, यह तो हमें ज्ञात ही है। अंतिम साक्ष्य उपन्यास में चंद्रकांता जी ने मध्यमवर्गीय परिवार के विवेचन कर उनकी आर्थिक स्थिति का सूक्ष्म अंकन किया है। लेखिका ने ऐसे पात्रों को रेखांकित किया है कि जो अर्थाभाव से पीड़ित है। नायक प्रताप सिंह बाबूजी हो या संगीत मास्टर अर्थ की समस्या से जूझते हैं। कठोर परिश्रम कर परिवार को सुरक्षित और आनंदी रखना चाहते हैं, लेकिन अर्थाभाव से उन्हें अनेक संकटों से सामना करना पड़ता है। अपनी इच्छा के अनुसार संगीत मास्टर अपने परिवार को सुख नहीं दे पाता, अतः उनका जीवन कष्टमय या पीड़ित होता है। बेरोजगार की समस्या है। वर्तमान समय में बेरोजगार एक भयावह रूप धारण कर रहा है। व्यवसाय अथवा काम के अभाव में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन इसमें निकम्मे तथा कामचोर व्यक्ति का समावेश नहीं होता। डॉक्टर पद्मा चामले के विचार से बेरोजगार वह होता है जो काम तो करना चाहता है पर काम उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन प्रयत्न करने पर भी उसे काम नहीं मिलता। अंतिम साक्ष्य उपन्यास में संगीत मास्टर उपाधि प्राप्त करके भी नौकरी के लिए दर के ठोकरे खाता है या दर भटकते हैं। काम की तलाश में तन मन जुटा लेते हैं, परंतु कहीं पर भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती। घर में पत्नी और छोटे बच्चे भूखे सो रहे थे, अतः हार कर उन्होंने कोठे वाली बाई से अपनी कला का सौदा किया। यहाँ बाई नाच गाने वाले लड़कियों को कुछ चुटपटा हल्का फुल्का मसालेदार सिखाना चाहती थी। बेरोजगार मास्टर जी इस काम के लिए भी तैयार हो गए हैं। उन्हीं के शब्दों में, मैं समझौते पर तैयार हो गया। बाई के पास धन का अभाव न था और उस वक्त मेरे परिवार के अस्तित्व का प्रश्न मुझे सता रहा था। अर्थाभाव या बेरोजगार से पीड़ित मास्टर जी अपने परिवार को सुरक्षित और खुशहाल देखना चाहते हैं। भारी स्वर में या भरी आवाज में वह अपनी पीड़ा मीनू के साथ व्यक्त करते हैं। तीसरी समस्या है वेश्या समस्या। मानव समाज में कहीं न कहीं प्राचीन काल से वेश्यावृत्ति रही है। इस समस्या से हम प्राचीन काल से इस समस्या को हम देखते रहे हैं। इसे कभी भी समाज मान्यता या प्रतिष्ठा नहीं मिली। इस वृत्ति के मूल कारण में पुरुष प्रधान संस्कृति या समाज रहा है। अर्थाभाव यह गौण कारण है, क्योंकि बहुत सी स्त्रियां गरीब में भी अपना परिवार सुखी और आनंदी रखना चाहती है और रखती है। अर्थाभाव से त्रस्त होकर जीवन यापन करती है, परंतु दुर्भाग्य से कई लड़कियों को अभिभावक न होने के कारण या माता पिता की मजबूरी का शिकार होना पड़ता है। ऐसे समय में रिश्तेदार और वह लड़की बोझ बन जाती है। परिणाम स्वरूप उसके जीवन की उपेक्षा होती है। प्रस्तुत उपन्यास की नायिका मीना के माता पिता स्वर्गवासी हो गए हैं। मीना उनके चाचा चाची के साथ रहती है, अतः चाची 12 साल की छोटी उम्र में ही बूढ़े 50 साल के रणवे लाला से उनका विवाह करती है। रात को जब बूढ़े ने मन्नू का घूंघट उठाया है, मायूस चेहरे पर 2 निष्कप तरल दीप लिए नन्ही मीनू के चेहरे में अचानक उसकी नन्ही पोती का मुखड़ा झांक जाता है।
तब बूढ़े लाला के रेशम के महीन इत्र से, महकते कुर्ते से, खिजाब रंगे पेशों से और मैला मोगरा के गजरों से सजे पलंग से ज्वालामुखी की लपेट उठने लगती है। लाला इन लपटों के अहक्कार में झुलसने लगता है। उत्साह से उठे उसके हाथ निर्जूम मांस की लोथ से गिर जाते हैं। वहीं पर लाला का छोटा बेटा भी उन पर हावी होता है। अतः मीना को लाला वापस चाची के पास छोड़ देता है। चाची की नजर से या चाची का ना करने का जो अंदाजा है वह देखकर लाला जो उम्र से बड़ा है वह चाची की बात का अंदाज लेते हैं और उसे वो कहते हैं कि ना करने पर उसके हाथ में 5,000 नकद रखते हैं और मीना को उनके पास छोड़ जाते हैं। तब चाची भी उल्टे पाँव उन्हें कोसती रही है, यानी कि मीना को वो कोसती है। फूटा भाग लेकर न आई होती तो जवान जहान माँ बाप को भी क्यों जीते जी मार जाती। अब चाची सवारेगी क्या खाक, लाला तेरे चरित्र पर शक करता है। उसके जवान बेटे के साथ ऐसा उसे उल्टे वो कहकर डांटती है। प्रस्तुत उपन्यास में बूढ़े लाला ने अपनी नातिन की उम्र की होने के कारण मीना को छोड़ दिया तो चाची उनकी दूसरी शादी अधेड़ उम्र के जग्गन के साथ करती है। मीना उनके सामने हाथ जोड़कर पैर पकड़कर गिड़गिड़ाती है, मुझे पड़ी रहने दो घर में चाची, सब काम करूंगी, खाना पकाऊंगी, कपड़े धोएंगी, रात को तुम्हारे पाँव दबाऊंगी। लेकिन चाची के सामने मीना की कुछ नहीं चलती। चाची के चेहरे पर हास्यास्पद कोमलताएं झलकती है। हट पगली, अब अपने घर खाना बनाना। कोई लड़की कभी हमेशा अपने माँ बाप के घर रहती है? तेरी किस्मत अच्छी थी कि जग्गन ब्याह के लिए राजी हो गया, नहीं तो एक बार जो मंडप चढ़ी उसका हाथ कौन थामता है। जग्गन जो यमदूत के जैसे भयावह चेहरे पर गज गज भर नकुली मूछे जिसे देखकर मिन्नू पत्ते से कांप जाती है, जो अपने लंबे चौड़े अब सुनी जिस्म को रोज सुबह तेल मॉलिश करके घंटों दंड पेलता था, हर जवान लड़की को छेड़खानी करता था, काम के नाम पर कभी कभी लोहे के जंग लगे टीन में छोले उबालता, सूरज ढलते तब वे आलू छोले सजाकर ठेला लेकर चौके पर निकल जाता। ऐसे गुंड प्रवृत्ति के जग्गन की शादी उसकी चाची कर देती है। चाचा उसे समझाते हैं, बेटी लड़कियों का अपना घर ही भला, कब कैसा वक्त आज किसे मालूम, हम लोग भी क्या हमेशा बने रहते हैं। जग्गन ने कुछ दिन में उसे लाड़ प्यार किया। डरी सहमी मन ने 2-1 महीने उसे लाड़ भरी दानवी नोच खसोट को सहने की आदी हो जाती है। परंतु कुछ ही दिनों में पति जग्गन उसे मदन दलाल के हाथों कोठी वाली को बेच देता है। कोठी वाली परीक्षा की दृष्टि से मीनू के बाल और शरीर के कटाव को देखती है। जब मीनू घर जाने की इच्छा प्रकट करती है तो कोठी वाली कहती है, बिट्टो यहाँ जो एक बार आता है वापस नहीं जाता। इस घर के दरवाजे के सिवा अब सभी दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए। इस प्रकार मिन्नू का पति उसे पैसे के लालच में बेच देता है। निष्पाप निरागस मिन्नू जो अपने घर का सपना लेकर यमदूत जैसे जग्गन को पति के रूप में स्वीकार करती है, परंतु पति जग्गन ही उसे एक कोठी वाली बाई से बेच देता है। उसके बाद की समस्या है अनमेल विवाह। विवाह मनुष्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य संस्कार माना जाता है, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों को एकत्रित रहने की या समाज मान्यता प्राप्त होती। इसमें दोनों की उम्र अथवा इच्छा का भी महत्व होता है। विवाह में आयु को महत्व दिया जाता है और जो स्वाभाविक ही है। विवाह समय वर और वधू की आयु असमान हो तो उसे अनमेल विवाह कहा जाता है। अनमेल विवाह में दोनों के आयु के साथ ही अगर स्वभाव, संस्कार और प्रवृत्तियों में असमानता हो तो ऐसे संबंध भी अधिक दुखद होते हैं। आज भी हमारे समाज में विवाह एकाधिकार रूप में ही होते हैं। सामाजिक डर के कारण अनेक अभिभावक अपनी बेटी की शादी छोटी उम्र में ही कर देते हैं, जिसमें कई लड़कियों की जिंदगानियां बर्बाद होती है। साथ ही हमारे यहाँ इस बात की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाता है कि शादी में पत्नी से पति की उम्र अधिक होनी ही जरूरी है। अगर पत्नी पति से उम्र में ज्यादा हो तो उसकी उपेक्षा की जाती है। परिणाम स्वरूप अनमेल विवाह की वृद्धि हो रही है। अनमेल विवाह में पति पत्नी में कोई भी उम्र से कम अधिक हो सकता है। वर्तमान में नई शिक्षा और नए वातावरण से युवक युवतियों में जागरूकता और हृदय परिवर्तन की अपेक्षा थी, लेकिन सामाजिक भय से आज भी वे अनमेल विवाह में बंध जाते हैं। अनमेल विवाह के कई कारण होते हैं। कन्या के पिता अथवा वर के पिता की स्वार्थांधता के कारण वर वधू की संगति के अलावा धन दौलत के आधार पर जबरदस्ती स्थापित होने वाले वैवाहिक ऋण बंधन मुक्त होने के लिए
दान, लोभवश कन्या की बिक्री आदि अनमेल विवाह के विविध रूप या कारण माने जाते हैं। प्रस्तुत उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या को विवेचित कर चंद्रकांता जी ने हमें संकेत दिया है कि विवाह दो जनों का संबंध नहीं तो दो हृदय का मिलन है, जिसके जड़ों में मानव समाज की सुरक्षा होती है। यह एक सामाजिक अनुबंध होता है जो मानव जीवन की पूर्ति के लिए आवश्यक भी है। इस उपन्यास में माँ बाप ने मृत्यु के कारण मीना अपने चाचा चाची पर बोझ बन जाती है। धन के लालच में अंधी हुई चाची मीना का विवाह 50 बरस के लाला के साथ करती है, जो कि लाला के लड़के भी मीना से बड़े हैं। लाला का छोटा बेटा उसकी ओर गिद्ध दृष्टि से देखता है और शरीर संबंध रखना चाहता है। लाला मीना पर तरस खाकर उसे चाचा चाची के पास वापस छोड़ आता है, परंतु चाची लाला को फुटकारती हुई कहती है, अब बिल्कुल होश फुटकारती हुई जब कहती है तो लाला कहने लगता है, अब बिल्कुल होश हवास में हो। तुमने लड़की की उम्र 21 साल बताई थी, अब तो 12 साल से ऊपर नहीं लगती। अतः चाची लाला से पैसे लेकर उसका विवाह फिर अधेड़ उम्र जग्गन से करती है, जिससे वो दोबारा अनमेल विवाह की शिकार बन जाती है। उसके बाद की समस्या है विवाहोत्तर संबंध। भारतीय संस्कृति में विवाह का विशेष महत्व है और इस संस्कार के कारण स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के साथ रहकर अपना जीवन जीते हैं या प्रेम संबंध निभाने की प्रतिज्ञा करते हैं। सुख दुख में एक दूसरे को साथ देते हैं या वो साथ देना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। लेकिन विवाह के पश्चात कभी कभी दोनों के बीच तीसरा व्यक्ति जब प्रवेश करता है और विवाहोत्तर संबंध की शुरुआत हो जाती है। ऐसे संबंध स्त्री पुरुष दोनों को भी भारी हो जाते हैं। इन संबंधों में आपसी टूटन, पराये व्यक्ति के बारे में यौवन आकर्षण, सहचार्य, संतानोत्पत्ति आदि कारण हो सकते हैं। आजकल स्त्री शिक्षा तथा नौकरी के हेतु घर से दूर जाती है, परिणाम स्वरूप वो किसी का सहारा चाहती है। यही सहारा या यही दोस्ती प्रेम संबंध में खरी उतरती है। मनुष्य अपने पारिवारिक जीवन से जब कटुता बढ़ने लगती है तो पहले के साथ छोड़कर नया साथी अपनाना चाहता है। इस संदर्भ में डॉक्टर अमोल कासार कहते हैं, आज की स्त्री किसी अन्य पुरुष के साथ अल्पकालिक संबंध स्थापित करने पर दाम्पत्य जीवन के प्रति विश्वासघात नहीं मानती। पुरुष तो पहले से इस क्षेत्र में 2 कदम आगे है ही। अंतिम साक्ष्य में उपन्यासकार चंद्रकांता ने इस समस्या को उद्घाटित कर हमें मानव जीवन के मूल्यों को सुरक्षित रखने का संदेश दिया है। विवाहोत्तर संबंध मानव समाज के लिए घातक है। ऐसे अनैतिक संबंध मानवीय जीवन का ह्रास कर सकते हैं। इस उपन्यास में बाबूजी यानी कि प्रताप सिंह और बीजी अपनी घर गृहस्थी में सुखी थे, परंतु पुरुषी वृत्ति की लोलुपता हो या बाबूजी के मन का कोई अनजाना कोना खाली हो, अतः वे मीना की ओर आकर्षित हो जाते हैं। मीना बार बार समझाती है, तुम दीदी के पास लौट जाओ, लेकिन बाबूजी पीछे न मुड़ सके। बाबूजी के इन संबंधों का कारण पत्नी बीजी अंदर से टूट जाती है और उसका अंत होता है। बीजी की मृत्यु के पश्चात बाबूजी मीना को अपने घर ले आते हैं तथा पत्नी की कमी पूरी करना चाहते हैं। वे कहते हैं, तुम्हें आज भी किसी सुख का लालच देकर साथ चलने के लिए नहीं कह रहा, बस थोड़ा सा सहारा चाहिए। मुझसे ज्यादा खिसकती घर वालों की मेरे घर के इस दीवारों को। दूसरी समस्या है धार्मिक आडंबर या अंधविश्वास की समस्या। इस तकनीकी युग में भी हमारे समाज में अंधविश्वास या धार्मिक आडंबर की समस्या है अपना पैर फैला रही है। मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, यहाँ हर रोज या दिन रात भर कई चैनलों पर यह समस्या, यह धार्मिक आडंबर की कोई बातें फैलाई जाती हैं। प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रचार प्रसार इस धार्मिक आडंबरों का खुलेआम किया जाता है। आज भी कुछ पाखंडी पुजारी, पंडित या ओझे आदि स्वयं को धर्म के ठेकेदार मानकर धर्म की गलत धारणाएं फैला रहे हैं। फलस्वरूप धार्मिकता का मूल पवित्रता या धार्मिकता की जो मूल पवित्रता होती है वह खत्म हो रही है। मी डॉक्टर संगीता संपत पाटील, कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय पलूस, आजच्या या इंटरनॅशनल कॉन्फरन्सचे कोऑर्डिनेटर डॉक्टर PM पाटील सर, महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर RS साळुंखे सर आणि या कॉन्फरन्सचे सर्व कोऑर्डिनेटर, आज ही इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालयामध्ये होत आहे। त्यानिमित्तानं मी सर्वप्रथम मला पेपर प्रेझेंट करण्यासाठी जी संधी दिली त्या संधीबद्दल सगळ्यांचं मी आभार व्यक्त करते। माझ्या पेपरचं नाव आहे शाहिरी वाङ्मयातून
ऐतिहासिक घटनांचे प्रतिबिंब. जर आपण बघितलं, या ऐतिहासिक घटना आहेत, ह्या ऐतिहासिक घटना खरं तर अनेक साधनांच्या मधून आपल्याला दिसतात. त्यामधलंच एक शाहिरी वाङ्मय. खरं तर शाहिरी वाङ्मय म्हणजे मुख्यतः पोवाडे असतील, लावण्या आणि लावण्यामध्ये मोडणारी भेदिक कवणं. एखाद्या वराचा पराक्रम असेल, राज्यकर्त्याचं गुणगान असेल, किंवा परचक्र किंवा देशावर कोसळलेलं संकट असेल, किंवा युद्धातले जे प्रसंग आहेत हे प्रसंग असतील, ह्या सगळ्याचं वर्णन जे हे वर्णन पोवाड्यामध्ये होतं. शाहिरी वाङ्मय हे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचं मौलिक असं एक वैभव जे हे वैभव असलेलं आपल्याला दिसतं. आणि शाहीर हे नाव खरं तर बहामनी राज्य आणि या बहामनी राज्याच्या अंमलापासून अगदी अरबी फारसी भाषेतून येऊन मराठीमध्ये रूढ झालेलं आहे. शाहीर आणि शाहिरी म्हणजे कवितेतील एक प्रकार होत. पोवाडे आणि लावण्या ही शाहिरी कवितेची अंग आहेत. शाहिरी वाङ्मयाला मराठी साहित्य परंपरेमध्ये वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान असून वाङ्मय इतिहासकारांनी आणि समीक्षकांनी शाहिरी वाङ्मयाचा गौरव केलेला आपल्याला दिसतो. एक काव्यप्रकार म्हणून पोवाड्याच्या अभ्यासाला जितकं महत्व आहे तितकंच महत्व ऐतिहासिक दृष्ट्या पोवाड्याला महत्व असलेलं आपल्याला दिसतं, किंवा पोवाड्याचा अभ्यास ऐतिहासिक दृष्ट्या महत्वाचा असलेला आपल्याला दिसतो. आपण बघितलं की पोवाडा म्हणजे वीरांच्या पराक्रमांच्या, विद्वानांच्या बुद्धिमत्तेचं, सामर्थ्याचं, गुणकौशल्याचं काव्यात्मक वर्णन असलेलं आपल्याला दिसतं. आणि लोकजीवनाशी शाहीर खरं तर पूर्णतः एकरूप झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यामुळे तत्कालीन लोकजीवन आणि या लोकजीवनाचं किंवा मराठ्यांच्या सामुदायिक भावजीवनाचं जे चित्र आहे हे चित्र हे यथार्थपणे रेखाटू शकलेले आपल्याला दिसतात. आणि असं विकार राजवाड्यांनी म्हटलेलं आहे की ऐतिहासिक सत्याच्या दृष्टीनं बखरीपेक्षा पोवाड्याला वरचं स्थान असलेलं आपल्याला दिसतं. ह्या पोवाड्याचा प्रारंभ कधी झाला तर अध्यात्म, परमार्थ, रामकृष्णांच्या कथा यातून मराठी कविता ज्या आहेत ह्या मराठी कविता मुक्त व्हायला अवधी लागला. भोवती स्वराज्याचा उदय झाला, अचाट असे पराक्रम झाले आणि समकालीन कवींनी या लौकिक यशाकडं जे लक्ष हे लक्ष तेव्हा दिलं नाही. अपवाद फक्त कोणाचा होता तर शाहिरांच्या पोवाड्यांचा किंवा लावण्यांचा. पोवाडे गाण्याची प्रथा खरं तर गोंधळी, भराडी, वाघे यांनी चालू ठेवलेली होती. शिवकाळ जर आपण घेतला तर शिवकाळामध्ये अज्ञानदास, तुळशीदास हे शाहीर गोंधळी होते. देवदेवतांच्या पोवाड्याबरोबर मराठे वीरांचे पोवाडे विक्रम वर्णनं ते गाऊ लागले आणि यावरूनच महाराष्ट्रातील पोवाड्याचा उगम जो आहे हा पोवाड्याचा उगम लोकधर्मातून झालेला आपल्याला दिसतो. आणि त्याचं स्वरूप जे हे त्याचं स्वरूप लोकगीताचं हे दिसून येतं. नंतर मात्र इतर जे विषय आहेत हे इतर विषय सुद्धा त्यामध्ये येऊ लागलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. पोवाड्याच्या रचनेमध्ये गोंधळ्यांचा सहभाग अधिक होता. या संदर्भामध्ये विकृ जोशी लिहितात की गोंधळ्यांच्या अंगच्या नाट्यगुणाचा उपयोग मुख्यतः राजकीय कामगिरी करण्यामध्ये झाला. ज्या राजांनी दुष्ट शक्तीच्या संहारासाठी पराक्रमाची शर्त केली त्याची आख्यानं असतील, कवणं असतील, कटाव, पाळणे, गोंधळी लोक जी होती ही पूर्वीपासून करत आलेली होती. आणि शिवाजी महाराजांच्या काळी गोंधळी लोकांनी कवणांचा एक नवीन प्रकार प्रचारामध्ये आणलेला आपल्याला दिसतो आणि हा प्रकार म्हणजेच पोवाडा आहे. पोवाड्याचं महत्व विशद करताना H.A. ॲकवर्थ लिहितात, या गोंधळ्यांनी महाराष्ट्रीयनांचा इतिहास वाचवला नसता तर आम्ही त्या इतिहासाला आज मुकलो असतो. त्या गोंधळ्यांचे उपकार केवढे मानावे आणि त्यांची योग्यता किती वर्णावी म्हणजे ऐतिहासिक दृष्ट्या पोवाडा हा किती महत्वाचा आहे हे आपल्या लक्षामध्ये येतं. मग पोवाड्यातून ऐतिहासिक घटनांचे उल्लेख कुठले झाले किंवा कशा पद्धतीचा झाला. खरं तर शाहिरी काव्य जर आपण घेतलं तर शाहिरी काव्याची परंपरा फार प्राचीन आहे. आज तागायत ती अखंडपणे असलेली आपल्याला दिसून येते. इतिहासाचं साधन म्हणून पोवाड्याचा अगदी मर्यादित प्रमाणे उपयोग झालेला आपल्याला दिसतो आणि इतिहासावर नवीन जे किरण आहेत हे किरण पडलेले आपल्याला दिसतो. पहिला जो पोवाडा होता, उपलब्ध असा जो पोवाडा होता हा अग्निदास किंवा अज्ञानदासाचा पोवाडा असलेला आपल्याला दिसून येतो. अफजल खानाचा वध त्याने या पोवाड्यामध्ये बांधलेला आपल्याला दिसून येतो. फारच माहिती आपल्याला या अज्ञानदासाच्या पोवाड्यामध्ये मिळते. किंवा शाहीर तुळशीदास होते यांनी तानाजी मालुसरेचा जो पोवाडा आहे हा पोवाडा गायलेला आपल्याला दिसून येतो. शेलार मामा, शिवाजी, जिजाऊ यांची सुंदर अशी स्वभाव चरित्र त्यांनी रेखाटलेली आपल्याला दिसून येतात. शाहीर यमाजीनं बाजी पासलकराचा जो पोवाडा आहे हा पोवाडा रचला आणि त्यावेळी बाजी पासलकर हा खरं तर याचं शिवाजी महाराजांना जे पाठबळ आहे हे
शिवाजी महाराजांना पाठबळ मोठ्या प्रमाणामध्ये असलेला आपल्याला दिसून येतो आणि हा विश्वसनीय असा पोवाडा मानला जात असलेला आपल्याला दिसून येतो. अनंत फंदी हा तर पेशवाईतील सगळ्यात लोकप्रिय शाहीर, त्यानं समकालीन इतिहासाचं वास्तव पोवाड्यातून मांडलेला आपल्याला दिसून येतो. सवाई माधवरावानंतरची मराठ्यांची झालेली अवस्था, नाना फडणवीसांना शिंदेची वाटणारी भीती, ही नानांच्या शब्दामध्ये अनंत फंदी सांगताना आपल्याला दिसतात. मल्हारदास शाहीर जो आहे, हा शाहिरांच्या डबई जी लढाई झाली डबईची, ह्या पोवाड्यानं आज उपलब्ध असलेल्या सर्व साधनांच्या पेक्षा पुष्कळ नवीन अशी माहिती ही माहिती मिळते. किंवा शिवराम शाहिरांच्या नानासाहेब पेशवे जे आहेत, ह्या नानासाहेब पेशव्यांच्या मृत्यूवरील पोवाडा जो आहे, ह्या पोवाड्यामध्ये नानासाहेबांच्या शिकारखान्यांचं पागाचं वर्णन आपल्याला मिळतं. असे अनेक जे पोवाडे जे आहेत किंवा जे शाहीर आहेत, ह्या शाहिरांनी ऐतिहासिक दर्शन जे हे ऐतिहासिक दर्शन पोवाड्यातून आपल्याला झालेलं दिसतं. म्हणजे अतिशय महत्वाचं असं जे साधन आहे, हे साधन पोवाड्याचं असलेलं दिसतं. सगनभाऊ जर आपण घेतला तर त्यानं खडकीच्या लढाईवरचा पोवाडा त्याचा प्रसिद्ध आहे. त्याचबरोबर पानिपतचा पोवाडा त्यानं रचलेला होता. काव्यात्मक वर्णनाच्या दृष्टीनं हा पोवाडा चांगला होता. पानिपतच्या लढाईमध्ये जे थोडेच पोवाडे उपलब्ध आहेत, त्यामध्ये हा महत्वाचा मानला जात असलेला आपल्याला दिसून येतो. म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्य काळामध्ये ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक घटनावर प्रकाश टाकणारे अनेक शाहीर होऊन गेले. पेशवाईच्या अस्तानंतरच्या स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये मराठी शाहीर लोकजागरण करत राहिलेले आपल्याला दिसतात. छत्रपती शिवाजी महाराज हे तर कुळवाडी भूषण होते असा वेगळा दृष्टिकोन जो आहे, हा स्वीकारून महात्मा फुलेंनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्यावर एक वेगळा वैशिष्ट्यपूर्ण पोवाडा लिहिलेला आपल्याला दिसून येतो. आज ही लोकांचं प्रबोधन करणारे नवे शाहीर लोकशिक्षणाचं कार्य करत असलेले आपल्याला दिसून येतात. य.ना. केळकर लिहितात त्याच्या संदर्भामध्ये युद्धाविषयक कितीतरी बारीक सारीक माहिती पोवाड्यातून आपल्याला दिसते. विशेषतः पोवाड्यातून शस्त्रांची जितकी नावं आली आहेत, तितकी नावं दुसरीकडं आपल्याला मिळत नाहीत. म्हणजे पोवाडा हा काव्य प्रकार आहे. हिंदुस्थानच्या सगळ्या भागामध्ये तो मिळतो. पोवाड्याची परंपरा 11व्या शतकामध्ये सुरू झाली. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मराठी राज्याचा पाया घातला, तेव्हाच शाहिरी काव्य बहरास आलं. पोवाडे गाण्याला खरंच स्फुरण देणारे विषय शिवरायांच्या पराक्रमानं दिलेले आपल्याला दिसतात. कल्पना विलासातून मांडलेल्या घटना सत्य असतीलच असं नाही, पण हे दुय्यम साधन जरी असलं तरी पोवाडे हे सामाजिक, राजकीय, ऐतिहासिक घटनांचं यथार्थ दर्शन करून देण्यासाठी अतिशय उपयुक्त असलेले आपल्याला दिसतात. कारण पोवाडा या काव्य प्रकाराबद्दल फार चर्चा झाली. चर्चेमध्ये पोवाडा हा काव्य प्रकारची ऐतिहासिकता आणि इतिहासाचं साधन म्हणून ग्राह्यता यावर भर दिलेला आपल्याला दिसतो. आणि भारताचं राष्ट्रवादाचं प्राचीनत्व शोधण्याचा प्रयत्न कित्येक अभ्यासकांनी केलेला आपल्याला दिसून येतो. पोवाड्यातून तो मांडलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि हे समकालीन कागदपत्राच्या अभावी इतिहासाचं अस्सल साधन देखील होऊ शकतो. म्हणजे पोवाडा हा यशोगान किंवा कीर्तिगान असं मानलं जातं. वीर पुरुषांचं शौर्य इतकं प्रेरणादायी त्यामध्ये ठरलेला आपल्याला दिसून येतो. पोवाड्यामध्ये इतिहासातील घटना ज्या ह्या इतिहासातील घटना प्रसंगाच्या चित्रणाबरोबर इतरही अनेक गोष्टींचं चित्रण शाहिरांनी केलं आणि इतिहासातील अनेक पराक्रमांचं वर्णन शाहिरांनी प्रभावीपणे मांडलं. प्रत्यक्ष लढाईच्या प्रसंगाशिवाय पार्श्वभूमी देखील अनेक गोष्टींचं तपशीलवार असं जे वर्णन आहे, हे वर्णन शाहिरांनी केलेलं आपल्याला दिसतं. महात्मा गांधींनी चले जाऊची घोषणा केली. त्या घोषणेनं सारी जनता पेटून उठली. शाहिरांनी डपावर थाप मारली आणि राष्ट्रीय चळवळीमध्ये उडी होण्यासाठी लोकांना उत्तेजित केलेले आपल्याला दिसतात. त्याचे पडसाद मोठ्या पद्धतीनं पडलेले आपल्याला दिसतात. ग.डी. माडगुळकर यांच्या लोकमान्य टिळकांच्या पोवाड्यामध्ये इंग्रज अधिकाऱ्यांनी भारतीयांवर कोणत्या प्रकारचा अत्याचार केला याचं वर्णन आलेलं आपल्याला दिसतं. म्हणूनच पोवाड्यांना शिवकाल आणि पेशवे काळातील राष्ट्रीय कविता असं म्हटलं जातं. मराठी शाहीतील साऱ्या राजकारणी उलाढालींचा इतिहास इथं येत नाही, तशी अपेक्षा करणं पण खरं तर चूक आहे. शाहीर कलावंत होते, त्यामुळे ऐतिहासिक विषयावर सत्य घटनेवर आधारलेले पोवाडे लिहित असताना थोडासा कलावंत जागा होत असलेला आपल्याला दिसतो. त्यामुळे कधी कधी अवास्तव स्तुती आली, पण इतिहासाचं साधन म्हणून पोवाड्याचा थोड्याच प्रमाणामध्ये उपयोग होतो. पण पोवाडा हे बहुजन समाजाला उत्तेजित करणारं पराक्रमाचं गौरवगीत आहे. पोवाड्यातून आलेली ऐतिहासिक घटनांचे संदर्भ इतर समकालीन प्राथमिक दर्जाच्या संदर्भ
साधनाशी अनेक मिळते जुळते असलेले आपल्याला दिसतात आणि इतिहास संशोधनाची एक नवी शाखा म्हणून सुद्धा पोवाड्याचं अधिकाधिक संशोधन किंवा संपादन व्हायला पाहिजे. कारण या पोवाड्यानं अनेक नवनवीन घटना जे आहेत या नवनवीन घटना समाजासमोर मांडलेल्या आपल्याला दिसून येतात. म्हणून शाहिरी वाङ्मय जे आहे ह्या शाहिरी वाङ्मयातून खरं तर ऐतिहासिक घटना आणि या ऐतिहासिक घटनांचं प्रतिबिंब आपल्याला दिसतं. वेळेअभावी मला सगळा पेपर वाचता आला नाही, पण थोडंसं त्याबद्दल मी डिक्टेट केलेलं आहे. तर मला पुन्हा एकदा सर्व मान्यवरांचं आभार मानते आणि थँक्यू. धन्यवाद. गुड आफ्टरनून टू एव्हरीबडी. I am Dashrath Olkunde, working as the assistant professor in Arts, Commerce and Science College, Palus. I am going to present my research paper entitled A Cross-Cultural Conflict in Jhumpalari's Unaccustomed Earth. The American dream attracted an increasing number of Indians to the United States in the 1960s and 1970s. The first generation of Indian Americans were cognizant of maintaining strong ties with their own culture, language and Indianness in the process of striking roots in an unfamiliar nation. Their descendants struggle to reconcile their hyphenated identities as time passed. As a result, concerns such as displacement, belonging, uprooting and cultural differences have emerged. Writers from the diaspora such as Jhumpalari have addressed these concerns in their works. The third book by Jhumpalari is Unaccustomed Earth. It's moving collecting of short stories on the tragedies and dramas of immigrant life. The purpose of this research paper is to investigate the topic of alienation that emerges as a result of the conflict between two identities, generational differences, cultural differences and competing agendas. Now finally, in this scenario, the absurdity is the Lahiri's characters is in a cultural that initially views them as exotic. This is a culture that they have adopted rather than inherited. Their familiarity with a foreign culture contrast with their alienation from their home country. Lahiri depicts various human relationships in all these stories from Unaccustomed Earth. Each story has completely different situations but all revolve around the same issue of past and current connections. It discusses how migration influenced the formation of identity and relationship. The impact of migration and diaspora is explored in all of these stories. These are stories of identity, redefinition and readjustment. First and second generation immigrants are separated in each of these instances. All of these stories revolve on the concept of cultural. Good afternoon everyone. Today I am here to present my own research paper, Gender Discrimination and Identity Crisis in Select Plays of Women Playwrights in Indian Languages. In this research paper, I am present the study of gender discrimination and identity crisis in the select plays of Indian women playwrights in different Indian languages. In Marathi, Hindi, Bengali and Telugu theatres are widely acclaimed women playwrights whose plays lies mainly in their unique characterization of women. Though they have their place in the different languages, their focus is on the gender discrimination, identity crisis and the role of women in Indian society. They attempt to interpret the complex role of women by probing deep into the inner recess of the feminine spirit. They portray them in such power and great insight that their plays become the work like an artist. They portray the struggle of women into triumph of their hardship and their still rise. Staging Resistance, play by women in translation, is the first major anthology published by Tutun Mukherjee. This anthology is a collection of women playwrights
translated playwriters. It represents the very significant intervention of gender in the discourse of Indian theatre. It draws attention to the possibilities of renewal and reinvigoration of the theatre environment through the work of women playwrights. It includes 12 plays from major Indian languages, including Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, Marathi, Gujarati, Punjabi, Hindi, Urdu and Bengali, translated into English, making them available for the wider readership. It focuses on formulating a humanist perspectivism and return to the ritual and celebration to articulate human experiences. It emphasizes the discuss on and around marriage, sexuality, divorce and womanhood in the light of structural institutional inequalities in the Indian continent. The status of women in India has been subject to many changes throughout recorded Indian history. Their position in society deteriorated early in the India's ancient period, especially in the Indo-Aryan speaking region, and their subordinate. Then, I especially focused on 4 major languages and/or 4 major theatres in Indian literature. First, Marathi theatre. Here, in Marathi theatre, Maltibai Bedekar is the well-known or renowned personality in Marathi theatre, and she wrote so many plays. In that plays, I choose Pray plays for my research work. This play is published in 1951. The play deals with the theme of bigamy, love marriage as against conventional arranged marriage, and woman's mute suffering within the family. The play employs innovations techniques where the thematical important and much discussed characters. The wife is not seen in the stage. Then second play in Marathi language, I use Muktabai Deshmukh's Gamble play. This play is also depict the women's condition in Indian society. Thank you, sir. Now I request to Mr. Sunil Patil, sir, to give their vote of thanks. Hello everyone. I am Mr. Sunil Patil, Assistant Professor, Department of English, here to express vote of thanks. To express thanks is such a prayer that cannot be seen or touched. It must be felt by heart. I feel honored and privileged to get the opportunity to propose a vote of thanks on this special occasion. I would like to extend my grateful thanks to today's key speakers, Dr. Elham Hussain from Dhaka, Bangladesh, who delivered their grateful slides on the topic of multiculturalism and individual identity. I also extend my grateful thanks towards today's speaker, Dr. Professor Trupti Karkatimans, Head Department of English, Shivaji University, Kolhapur, Maharashtra. I feel gratitude to Dr. Namdev Gapate from Banaras Hindu University, Varanasi, and Dr. Yogesh Patil from Vidya Vardhini College, Dhule, who share their views and opinion on multiculturalism in Marathi and Hindi language. I would like to thank Sri Ramchandra Patil Bhau, Chairman Palus Section Prasarak Mandal, Palus, and Honorable Sri Dhonram Shinde Anna, the Secretary of this institute, and our college principal, Dr. R.S. Salunke, Sir, IQAC Coordinator, Honorable Dr. P.M. Patil, who supports us to organize conference and other events. I would like to also thank to Dr. S.R. Parlekar, Dr. S.P. Wag, Dr. Sudhir Lendwe, Sri Prakash Nikam, Sri Harshal Zaunzal Sir, Organizing Committee, Faculty of Department, English,
Hindi and Marathi also, teaching faculty and staff of this college. Especially I would like to thanks to the delegates and well-wishers of the conference. Once again, thanks all. Thank you very much.